Suche. Heise? Hey, ja. Wäre. Bereite. Waha. Heise? Hey, ja. Suche. Bereite. Holzer. Bereite. तेरी साइड चाइनीज है। Okay. Ja, Holzer. Heise? Boevere. Ja, heise. Ja. Bereite. Jägere. कैसे हार सकते हैं हम ये गेम? Ja. Jägere. यहाँ प्लेयर 3 से मर जाओ, प्लेयर 4 से आई मीन। हाँ वो एलिफेंट आर्चर करेगा। ओके आई थिंक मैं हस्काल दे सकता हूँ बट वैल्यू वाइज इवेंचुअली अगर वो खेलें पैलाडिन एलिफेंट आर्चर मर जाएंगे। हम अर्ली इंपीरियल में बेटर है, लेट इंपीरियल में ख़राब है, पोस्ट नेप में फिर से बेटर है उनसे। फिर ठीक है। बट फुल बूम इनटू 200 पॉप आर्मी में हम मार जाएंगे अगर उनके पास गोल्ड है। फिर जैसे ही ट्रेड के कैन होगी हम फिर हारना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रेड नहीं करने देते उन्हें, मना कर देते हैं उन्हें। एग्जैक्टली नो ट्रेड गेम। यस एग्जैक्टली। मेरे से क्या चाहिए बताओ? नो मैं तो बूम ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 3TC आर्प खेलो, लाइक फास्ट बूम 24+2 3TC आर्बलिस्ट। यहाँ पर जल्दी ख़त्म करते हैं ना। चाइना पे तो कुछ आंसर होगा नहीं कुछ। आइदर चाइना या मैग्यार को भी टाइम लगता है ना थोड़ा सा पिकअप करने में, पैलाडिन या फिर कैव आर्चर। और बंगाली तो क्या ही ले आएगा उसका। लाइक बेसिकली एक बंदे को ख़त्म कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ मेरी साइड मैग्यार को ख़त्म कर दो क्योंकि वो डूम्स को तो मैनेजर खेल सकता है आराम से, और हम लोग डबल करके पॉकेट को मार देंगे। वैसे मंगोल को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। ऑनेजर से वो टाइम बाय कर सकता है ना काफ़ी ज़्यादा। ऑनेजर ट्रैप मैं तो रोक दूंगा इसको तो आराम से। इससे मर के तो फिर सोने चले जाऊंगा। Ja. Hey, ja. Boevere. Bereite. Holzer. Holzer. Ja. Holzer. Heise. Ja. Bereite. Ja. Boevere. Heise. Boevere. Ja. Heise. Holzer. Ja. Suche. Ja.
Ubere. Bereit. Ubere. Ja. Bereit. Heise. Hauber. Ja. Heise. Ja. Suche. Ja. Bereite. Heise. Hey, ja. बंगाली को एलिफेंट मिलता है ना, चीज एलिफेंट। Yep. जस्ट इन केस थिंकिंग अबाउट दैट एज वेल, अगर रश करना चाह रहे हैं वो लोग। तेरा बंदा में भी कैसल ड्रॉप Bereit. बंगाली का तो स्काउट गया। Hey, ja. Ubere. Bereit. Das ist toll. Ja. Ubere. Ubere. Heise. Ja. Heise. Ja. Uaha. Uaha. हमने इस साइड आ गया, चेज कर रहा है। Bereit. Ja. Hey, ja. Ubere. Holzer. Heise. Ubere. Ja, ja. Holzer. Bereit. Ubere. रेड भी है यहीं पे। देखते हैं। मैंने स्टिक को डाल रहा। यहाँ पे डालो आई थिंक। मेरी साइड कैसल ड्रॉप। Uaha. Das ist Gold. Heise. Ubere. Ubere. Ja. Ja, Ubere. Ubere. Bereite. Heise. Ubere. Bereite. Ja. Heise. Ja. Ubere. Hey, ja. Ja. Ubere. तो कैसल पे जा रहा है शायद। Ubere. Hey, Suche. Ubere. Bereite. Suche. Ja. Ja. Ubere. Heise. Ubere. मॉनेस्ट्री के पास आ जाओ मेरी, मत जाओ कैसल में। मैं हील कर दूंगा दोनों के साथ। मैं नहीं डालूं फिर मोनेस्ट्री। ना आप रैली को उठाने के लिए ले लो। मैं उठाऊं? देखते हाँ आप रैली को उठाओ, मैं बेस में ही बस कैंप करने के लिए रख रहा हूँ।
Heise. Bure. Heise. Halva. Ja. Bure. Ja, bereid. Ja. Bure. Heise. Bure. Gebure. Bereid. Ja. Movere. Valsa. Heise. Bereite. Hey, ja. Heise. Movere. Ja. Bereite. Hey, ja. देखो जरूरत है मेरी मेरे को नहीं ड्रैगन को कह रहा हूँ मैं पहले ड्रैगन को ही बचाओ ना मेरे स्काउट की तरफ लिया देखो ड्रैगन
टर्म्स भी मिक्स करने शुरू कर दो. मारो मारो. उसकी प्रोडक्शन रेंज पे खड़े हो जाओ. देख के चल. ट्रैप करो. देख के अपना ट्रैप्स पर. रैम्स भी बना लो और ये मारो. हाँ उसके लिए भेजो. यहाँ पाइकमैन रखी हो. Saladin! Crusaders are attacking our trade route!
तो वन जस्ट टाइप करो हाँ इसको मस्त बड़ा बूम शॉट्स पड़े। हाँ एक बार बूम करके आने दे कर लिया तो उसके नहीं बाद मतलब मैं उसको sign रश है। नहीं कर रहा था, मैं तो सारे मजे से एलिट मैंगुडा है सी जॉनर विनर लेके मजे से। अब तो मुझे मार ही नहीं सकता वो। हाँ Pace? Ja. मेरी साइड तो मार सुसाइड ही भाई कर अभी। रहा था। बंगाली वाला भी स्मर्फ ही था। आपके वो ट्रैप्स भी सही रहते हैं एलिफेंट्स के अगेंस्ट, वॉरवुल्फ ट्रैप्स। ट्रैप्स बना तो रखे थे वॉरवुल्फ। कहाँ है? अभी मैं सेंटर पुश कर रहा था ना कैसल, यहाँ का तो सब मार दिया था। नहीं मैंने कहा वो एलिफेंट्स ही मार देंगे वो वॉरवुल्फ ट्रैप्स। हाँ लास्ट रेडियस होता है ना। बहुत ही वियर्ड सा वो था, मार था उसका, बट हाँ ठीक है। हाँ बहुत मार ही देगा नहीं तो। रश करके स्लो डाउन कर ही रहा था। मैंने इतना डैमेज नहीं लिया, 2 TC कर रखा था, वो 1 TC था काफी देर से।
पहली कल फिर आप अकेले खेल रहे थे, दोनों बंदे खेल रहे थे या उसकी 4 वाली लॉबी खेल रहे थे, 4 मैन लॉबी? क्या कह रहा है? मैंने कहा कल आप दोनों ही खेल रहे थे या 4 बंदे साथ खेल रहे थे? टोटल वो 4 पैक बंदे। करना है, वो चॉकलेट्स वगैरह है वहाँ पे। वो डब्बा है ना, वो पैक कर देना। गुड आंसर। ऐसे ही आंसर मिलते हैं सर के। हाँ, क्या कह रहा है तू? मैं कल फेसबुक पे आप दोनों ही खेल रहे थे या 4 बंदे खेल रहे थे? नहीं, 2 ही थे बस, सब नहीं थे। क्या हुआ? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ। Let's smoke up. अच्छा, हितेन क्यों नहीं आ रहे मगर? पसंद नहीं है क्या अब हम लोगों ने? बिजी पता नहीं, है मैंने लाइफ मैसेज में। किया। कोई भी न्यूज़ ना कि कह रहे मैं ये पूरे हफ्ते न्यू ईयर्स तक फ्री हूँ, एकदम वेला हूँ। हाँ तो फ्री हो गए, और वो फिर जा उसके रहे हैं, बाद बाहर में जा रहे जल्दी आते नहीं। हैं। यहाँ थोड़ी रहेंगे। फ्री का मतलब ये थोड़ी ना गेम खेलना। गेम ही बोल रहे थे वो तो कि मैं खेला करूँगा। झूठ बोल रहे थे इसका मतलब तो। झूठे ही है वो तो मुझे भी पता था। यार ड्रैगन पॉकेट चला गया। Yes. एक गेम आप, एक गेम में। वाह, गेम मिलती आ गई थे। क्या हाल है भाई? अरे यार तू ऑल्ट लेट F4 कर दो हितेन। खेलने आ जाओ। खेलूंगा, हाँ खेलने ही आया हूँ। नाइस। कोई है क्या ये जर्मन्स के अगेंस्ट ही है क्या? अगर आपको अच्छी गेम के लिए तो मैं ऑल्ट F4 करो, फिर तो खेलो, मैं देख लूंगा ये गेम। अच्छी गेम मैं थी। कर चुका करो है कि ना। मत करो ऑल्ट F4 फिर। कोई नहीं, अब आप आ गए। अब अगर अब आप नहीं खेलोगे तो बिल्कुल नहीं खराब हो नहीं, मैं चुका। तो खेलूंगा ही भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नहीं ऑल्ट F4 की और अच्छी ऑल्ट गेम है तो F4 भी खेलो। हो गया और चले भी गए, वो फिर बहुत ही सैड होगा। नहीं नहीं, मैं तो इधर ही हूँ। क्या बात है, एक गेम का टाइम है मेरे पे। रेड शेड डाल दिया। तीन पैसे छापने बैठे हैं, कितने टाइम बाद आ गए। सही है, सब मिस कर रहे थे आपको।
थोड़ी सी बारिश हम पे भी कर दो यार। हेलो ओल्ड यहाँ क्रिसमस पे भी काम करना पड़ रहा है। काम करना हमारी क्रिसमस अरे दोस्तों और हेल एक बात बताओ, ये मैं सुल्तान की टीम में आया हूँ, मैं हूँ सुल्तान है। बस तुम ही होते हैं। और कोई अच्छा नहीं नहीं सुल्तान भी नहीं है। अरे उसने अपने आप को खिलाना बाइक पड़ेगा कर लिया उसको। आपको खरीदने के चक्कर में। वो तो कह रहा है मैं तो पोकर खेल रहा हूँ, मैंने कहा कि आजा खेल लेते हैं, कहता मैं तो पोकर खेल रहा हूँ। बहुत सही। वो उसका चलता रहता है बुकर पूरे कल टाइम। भी कर रहा था मतलब मैं कोई फक्स ना दूं हम्म ज्यादा फक्स ना दूं मैं भी कुछ। नहीं नहीं तो जीत क्या सकते हो। प्रोफेशनली खेलते हैं या मजे के लिए? पता नहीं टूर्नामेंट हुआ गाइड करोगे तो जीत जाओगे। तो जीत टेक्सास सकते हो। होल्डम होल्डम यार अब ज्वाइन करो यार, इतनी बातें कम करो, अब समझ में आ रही है भैया आपको? यार कोई इन्फॉर्मेशन तो दे सबसे दो यार। खतरनाक टैलेंट वाली टीम है, उसको मारना है। टैलेंट के साथ कौन है? सारे एवरेज वो- प्लेयर्स हैं बट फिर अच्छे एवरेज वो वाले पता हैं। चल जाएगा। आप लॉबी ज्वाइन करो यार इतने। व्हाट इज कर दिस? चुका हूँ, क्लिक कर चुका हूँ यार, रुकेगा एक सेकंड, मुझे टीम तो स्लो देखने दे है अपनी। आपका। अरे मिरर है मेरी, नहीं कौन है? हाँ मिरर है, वो भी वो ठीक नहीं है मिरर। वो लॉबी बग्ड है। अरे मिरर भी है हमारी टीम में, वो भी नहीं ठीक। हेल हाँ बहुत सही है, इतने ओपी है खत। अरे यार ओपी तो कोई भी नहीं है पूरी टूर्नामेंट में कोई ओपी नहीं है वो तो फिर बस सारे वही है चंगू मंगू। अपने चंगू मंगू से जीत जाओगे तो सही है, उसके बाद वरना आपके कोई चंगू और ले मंगू आप जाएगा। ही पड़ जाएंगे। अरे यार ये अच्छी नो चांस की टीम मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि वालर अच्छा खेलता है इन सब में से। क्या टीम ज्वाइन होगी? करो मेरे को। फिर से क्यों करा तूने उस? ये अरे लॉबी लॉबी बोला। बग्ड थी भाई। और अशोका कैसे खेलता है? हुक्ड ओपी लॉबी। है वो भी। हैं? ओपी। अरे यार क्या? नहीं टैलेंट की नहीं, टीम में अब- अच्छा टैलेंट बोसडी के मिस्टर रॉन्ग ये सारे डिसेंट प्लेयर्स हैं। हाँ और लकी ड्रैगन 23 आजा कैसे भाई। खेलता है? राइट यस कौन कैसे खेलता है? लकी 23 हाँ, वो भी अच्छा खेलता है। सच बताए ओपी नहीं है वो। नहीं वालार की टीम OP भी तो से- ठीक है। ओपी रुक के प्लेयर से ruthless- तो आपकी टीम में अच्छा मेरा हमेशा ही लाइक खराब ही रहता लग यार, ऐसा क्यों है डूड सर? लाइफ में मेरे क्यों ऐसे लगा रखे एल? आप फक्स नहीं देते ना, फक्स दोगे तो अच्छी टीम मिलेगी। यार उससे उनका क्या लेना? अच्छा उनको लगता है कि हमने भी नहीं फक देना, इसने भी नहीं फक देना, आराम से करो है। फक में अपनी फक कर देते हैं तो ठीक है मैंने क्या हो रहा है ये? यार ठीक है लाइक मुझे लग रहा है कि लाइक देख मुझे लग रहा है कि है नहीं कुछ खेलने लायक वहां पर चल रहा सिस्टम। तो मैं जब भी खेलने आया करूंगा मैं तुम्हारे साथ ही खेल लिया करूंगा। मेरे पास मैंने तो जो पहले ही बताया था मेरे पास अगले 10 दिन फुल खेलने के लिए ये लोग भी तो वही देखा- खेलते हैं दिक्कत तो ये है पता है मुझे। नहीं ये इधर भी तो खेलते ही हैं। लाइक अगर हम होंगे सारे तो फिर तो इधर ही खेलेंगे। इधर वहाँ पर खेलने में तो बस एक दिक्कत है, लोग नहीं मिलते खेलने के लिए और कुछ एग्जैक्टली नहीं है। तो जब यहाँ पर लोग नहीं मिलते तो वहाँ चले जाते हैं हाँ। लोग which makes और that is like 90% of the time 10% of the time मिलते हैं गेम और उसमें 5% of the time अच्छे गेम मिलते हैं। जैसे अभी से 1 या 1.5 घंटे में टीम आना शुरू होती है, अच्छा फिर वो 3-4 घंटे खेलती हैं, उसके बाद फिर हम बॉम्बे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे होती है बड़ी बकचोदी। हाँ लड़ाइयाँ होती हैं मजेदार वाली। वीवी ड्रामे वगैरह होते कर रहे हैं हैं, टीम एक चाइना। दूसरे को वो अपने एक नोट्स दूसरे के को साथ गंदी खेल गाल- रहे हैं। एक दूसरे को गंदी गालियाँ कभी दे गांड देते मारते हैं। हैं कभी मरवाते हैं। हाँ। और ऐसा भी नहीं है ना कि ईलो की रिस्पेक्ट है, जैसे यहाँ पे ड्रैगन कहते हैं ना मैं हाई ईलो तो मुझे ही पता है, नहीं ये बॉम्बे आएगा इसकी गांड मार देंगे। ड्रैगन कहाँ कहता है ऐसा यार? जबरदस्ती इसको- बदनाम कर रहा है उसको, और वो कहता है तो उसकी सुनता कौन है? यस नहीं उसकी गेम उसको वहाँ पे सिखा देंगे। जैसे मेरे को एक बंदा उस दिन दारू पी के कह रहा है तू चुप कर पहले गेम सीख कर आ। यही तो देखना मैंने। जब भी वहां जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे प्लीज। तुम मिस कर रहे हो यार, तुम मिस आउट करते हो बॉम्बे लॉबी में ना। कौन घूमने आया है करो यार। अरे यार देखो अरे हितेन आप मेरी तुम्हें असली पहले चिल मेरी- गेम चाहिए तो तुम वहाँ खेलो ना। नहीं तो हितेन पहले आप मेरी बात सुनो और फिर वो आगे से क्या कमबैक दे रहा है मेरे को। वो तो तू शुक्र मना मैं कीबोर्ड यूज नहीं करता हूँ, अगर मैं कीबोर्ड यूज करने पे आ गया तो तेरे को उड़ा दूंगा।
पिंटू हो गए तो पक्का। मजेदार awesome। तो पिंटू सीरियसली सिर्फ माउस से खेलता है। तो सोच लो समझ लो, इतने 14 तो खेलता है वो सिर्फ माउस से। मगर वो इस जब टूर्नामेंट सब में कीबोर्ड के साथ खेलने लगे फिर क्या बनेगा हमारा? तो सब लोग जब इक्वल हैं तो कितना मजा आ रहा है, समझ रहे हो आप? हाँ लेकिन तू जब चला जाएगा तो इक्वल नहीं है ना कुछ भी। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे कहाँ हिसाब जाएगा से। ये यहीं है हमारे साथ में ही है, कहीं नहीं जा रहा है ये। मेरे हिसाब से वालार की टीम अच्छी है, टैलेंट की टीम अच्छी हाँ उन दोनों की अच्छी बैलेंस टीम है। अरे हाँ। टैलेंट की टीम का क्या है ना इतने बाकियों को तो क्या है ना कि कि तुम टॉप प्लेयर को वैसे ही मार दो, तो उनकी हाँ, टीम में आप कोई है नहीं कैरी करने वाला। हाँ आप हाँ कोशिश करके पुश करने की ट्राई करोगे, वो साला सारा कुछ लगा के डिफेंड करने में लग जाएंगे कि दूसरी साइड पुश कर दे, वैसा हाँ, सीन है। हाँ जी, हाँ। और टैलेंट काफी- क्या आपकी टीम में काफी जबरदस्त है। आपकी टीम में एक बंदा है, उसका नाम है फ्रैग स्टार। उसके हाँ। नाम में ही फ्रैग है ना, जो ग्रेनेड फेंक वो देता है ऐसा फ्रैग वो वाला। ऐसा वो ऐसा फ्रैग है, Frags you, he या frags you, तो not the या तो enemy। पिन निकल गई और दूसरी तरफ चली गई तो दूसरी टीम फट जाएगी, मतलब अच्छा पेल देगा। अच्छा या तो अपना वो पंजाब वाला ग्रेनेड है कपड़ा ही खुद फट ही फट जाएगा। गया हाँ तो- देसी कट्टा हाथ में ही फट जाएगा। हाँ, कि खुद ठीक है। क्योंकि कल एल को वो झूठ बोल दिया, एल कह रहे मेरे बेस पे आ, डूबस्टर मेरे बेस में, कह रहा हाँ आ रहा हूँ, और मेरे बेस में आके अपनी सारी आर्मी मरवा दी। एल को भी छोड़ दिया अपने बेस में मरने, मेरे बेस में भी आके मरवा दी, क्योंकि पेट्रोल तो आता नहीं है करना, राइट क्लिक आता है। तो वो 15 आर्चर आए, 5 आर्चर ने सारे 15 आर्चर मार दिए उसके। अमेजिंग यार। ठीक है। और फिर गेम के बाद एल को कह रहा है नहीं आपने शायद नहीं बुलाया था मुझे, बाद में बुलाया होगा। एल कह रहा है भाई अभी बुलाया था। अच्छा फिर सॉरी, तो वो सॉरी भी बोल देगा वो। फिर मैंने उसको समझाया, यार, मैंने कहा देख तू हेल को झूठ बोल देता है, हेल गालियां दे देगा तेरे को, मेरे को दे देगा, मैं भी गालियां दे दूंगा। मैंने कहा पर अगर तूने हितेन को झूठ बोल दिया ना टूर्नामेंट में, मैं कहा तू लिख के ले ले, हितेन तेरे से बात नहीं करेगा पूरे टूर्नामेंट, वो डर ही गया। कह रहा है अच्छा मैं ही ऐसी थोड़ी की बात नहीं करूंगा, कैसी बातें कर रहे हैं। ये लॉर्ड को पहले डरा दिया तेरे हमने। हमने कहा मैं तो कुछ भी नहीं बोलता यार। मैंने कहा मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक बार मैंने भी झूठ बोल दिया था, हितेन ने मेरे से बात नहीं की। मैं तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा। अरे मैं झूठ बोलना पड़ता है ना हितेन। अच्छा और झूठ को छुपाने के लिए और झूठ झूठ बोलना पड़ता है। Yes. झूठ भी झूठ को काटता है। झूठ ही झूठ को काटते हैं, बहुत सही यार। पर वैसे एक्चुअली मुझे पसंद नहीं झूठ बोलना। लाइक तुम बता दो जो सच है, इसमें क्या हो जाएगा? अगर झूठ बोलने से कुछ ना तुम्हें कुछ मिल रहा है ना किसी और को। अरे यार उस दिन मजेदार था। मैंने कहा आप लोग रैंडम खेल रहे हो पिक्सिव डूम्सटर, मैं ना बर्बर जा रहा हूँ ना, नाइट फ्लड कर दूंगा। मैं क्या कहा बात है, पता नहीं बहुत ही क्या ही तबाही मचाएगा ये है कैसा एज में। मैंने कहा कि आपका स्कोर काफी कम लग रहा है, आप कर क्या रहे हो? मैं रेडिंग सही, 1900 बहुत ही- स्कोर है इस बंदे का, कैसल एज में बर्बर 1900 स्कोर के साथ कौन सी रेडिंग। मैंने आगे देखा 3 नाइट के साथ घूम रहा है, उसके हाउसेस मार रहा है। मेरे को क्या ही रेडिंग चल रही है आगे, खतरनाक बेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। Flood मैंने हो कहा गया। कि विलेजेस कितने हैं, कहता 31। मैं वो तेरी खतरनाक रेडिंग हो रही है आगे। उनको टीजी मिल गई यार। आपकी वजह से हुआ आई थिंक ये सब। वाओ सॉरी यार। कोई नहीं रहते। फिर अभी वहाँ पे अद्दू को बोला कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इंटरव्यू दे दे। अद्दू कह रहा मैंने चड्डी नहीं पहनी। अब्दुल क्या कह रहे हैं? मैंने मैंने चड्डी नहीं पहनी हुई। ये एक्सपर्ट ओपिनियन। मैंने कहा भाई यूट्यूब की इंटरव्यू आ गई, ओनली फैंस गिरी। वाओ क्या था वैसे अब्दुल को एक्सपर्ट ओपिनियन क्या था? अरे वो मतलब ऐसे ही मांगना चाह रहे थे कि उनको क्या लगता है कौन सी टीम अच्छी है, क्या है ये सब वो सब। अच्छा अच्छा टैलेंट मैं कहीं बॉम्बे का भी सही चलता रहता है, कोई ना कोई बकचोदी करता रहता है वहाँ पे। और बढ़िया ही है, अच्छा लगता है कि बकचोदी चलती रह रही है, लोग खुश हैं, और क्या चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि जितनी भी गेम की नॉलेज होगी ना सारी जीरो हो जाएगी वहाँ जाके। हाँ जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करेंगे आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये टेक ट्री है इनका। उस दिन मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरी स्ट्रीम देखते हुए एक बंदा कह रहा है अरे तुम हैंड कैनन्स कर लो यार। मैंने लिटरली टेक ट्री खोल दिया। मैंने कहा परमिस को कब से हैंड कैनन मिलने लग गए? इसको नहीं मिला। जिस उसने कॉन्फिडेंस में कहा ना अरे हैंड कैनन्स करो ना, मैंने कहा अरे इनको कब से मिलने लगे?
मादी कमा। अरे भी यार क्या भाई डूम्सडे ने क्या फोटो लगाई हुई है कांड की। ये लोग ये तो पैसे ये- लगा लगा ये के type है। अच्छे अच्छे आइकन्स लगा रखे अंदरवार हैं। होती है यार, ये तो हेलरेजर की भी अंदरवार ये होती मैं है। भाग रहा हूँ और मेरे पीछे अमन अग्रवाल पड़ा हुआ है। क्या अब यार इतना गुस्सा मत वो करो अमन यार। है लाल आंखों वाला। मैं थोड़ा ऑफलाइन खेल लेता हूँ, बिल्ड हो जाएगा तेरा वो। सही है यार ये रैंक पे होगा इधर। एनिमेटेड प्रोफाइल्स। तू दे दियो ना मेरे को अपना अकाउंट ड्रैगन, मैं लॉगिन करके तेरा भी लगा दूंगा। ऐसा होता है। अरे डीएलसी मेरे पास पड़ी है ना, तो ओह। शेयर हो जाएगी अरे वो। मेरे पास तो टूर्नामेंट खेल रहा हूँ वो भी नहीं है मेरे पास, तो सिव्स भी नहीं है सारी। और क्या सिव्स खरीदनी पड़ेंगी सारी। क्या? या नहीं नहीं फायदा नहीं नहीं ये तो सिर्फ सिर्फ इसका ये वो है ना एनिमेटेड। अरे मैं क्या कह रहा नहीं हूँ, नहीं मेरे वो पास सिव्स नहीं टूर्नामेंट है। खेल रहे हैं। सिव्स के लिए लाइक सिव्स अच्छी है काफी, या फिर नहीं है इतनी वर्थ इट की? ना मतलब जब आप इंडिया जाने से पहले, हाँ एक थी जब आपने खुद ही देख ली थी। अच्छा वो जो देते हैं ये लोग सब पूरा कुछ। छोड़ देते थे। हाँ अरे ये तो ठीक प्लेयर्स हैं, उसेन बोल्ट वगैरह 1902 के आ गए थे। ये वाली मैं और टीम ड्रैगन है। टूर्नामेंट टीम में थे और मैं और ड्रैगन बात कर रहे हैं, नहीं यार ये अब्यूज तो नहीं करेंगे ना? ड्रैगन कह रहे हैं, कर सकते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 5 कैसल है। थोड़ी देर में देखो सारे चले गए। भाई मैं कौन सी टूर्नामेंट देख रहा था, उन्होंने एनईसी क्वालिफायर्स में भी अब्यूज किया आई थिंक, या फिर पता नहीं किसी और वाइपर ने मारा था ना विलेस को। हाँ छोड़ते नहीं भाई कोई भी। अब क्या करें। टीम में क्या ही है जैसे बोलो। उस दिन नितिन सुबह का टाइम है, मैं जल्दी उठ गया। मैं देख रहा हूँ हेरा स्ट्रीम कर रहा है, 1300 वाले को कोचिंग दे रहा है, ठीक है। वो भी कोई स्ट्रीमर ही थी। और कोचिंग क्या है, अरीना पे उसको फास्ट टीम का बिल्ड ऑर्डर बता रहा है टर्क का। या वर्थ इट है। मैंने कहा यार सही है, ये वाली कोचिंग तो मैं भी दे देता हूँ, खाना खाते खाते दे दूँ। कि हाँ भाई अगला विलेजर अब इस पे भेज, इस पे भेज, हाँ चल $150 दे चल। ब्रांड नेम बनाना होता है यार बस। हाँ ये क्या बकवास है भाई। चल $150 दे, हाँ अब 18 पॉप स्कोर सिखाता हूँ। हाँ चल वापस जब 19 पॉप्स और $150 फॉर 1 बिल्ड ऑर्डर, ये सही है। और वो सेम बिल्ड ऑर्डर उनको उसको सब्सक्राइब करके मिलता है, पर नहीं अब वो अपने साथ बोलेगा भी। देख अगर स्ट्रीमर है तो वो एक्सपोजर और उस सब के लिए इन्वेस्टमेंट समझ ले, वैसे और कुछ नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स जो कन्वर्जन मिलता है उसकी स्ट्रीम पे जाने से, उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन कि गेम इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम्हें। आई थिंक बिजनेस वाइज तो वही है, मेक सेंस। देन मेरा तो वॉलेबल मैप है जो एक्चुअली देते हैं जो FT स्ट्रीमर और वैगन। यार मैं तो सोच रहा था कि टूर्नामेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, बट देखो आपकी मर्जी है। मैं जापानीज हूं ना किसी को। हाँ तो 2v1 खेलो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी सारी। अच्छा यही प्रैक्टिस है असली। वही तो है। और क्या हाँ वॉलीबॉल है, मैं बॉल करके शॉट्स खेल लो। एलएफसी क्रॉसबो खेल, पता नहीं मैं जापानीज हूं, खेल लेता हूं मैं। और वैगन खेल रहे हो तो 1TC खेलना पड़ेगा बहुत देर तक, जब तक हाँ खेल 1TC खेलूंगा। जब तक खेल नहीं फिर मैं तो एक तो वैसे भी- अडैप्ट 1920 वॉक करूंगा मैं भी, फिर वॉक करके क्या तू करूंगा। बता नॉर्मल खेलना है या फिर हाँ मैं शेनानिगन्स? शॉट्स करता हूँ। ओके ओके नहीं नहीं शेनानिगन सिर्फ मेरे को लाउड है, तुम लोगों को नहीं। कहाँ है भाई मेरे टीयर्स? वाओ या फुल बूम कर लो देन। मर्जी करो यार। देखो अगर जैसे अब नॉर्मल नहीं हो रहा फिर तो जो मर्जी करो। मैं क्या ही है। जो अच्छा लगता है।
Barevces, Barevces, Eskanam, Ayo, derim takabor. Barevces, derim yes, Jonovan. Ramangtser, Terim Takabor, Yes, Iskarusanem. Barevces, Terim Takabor. Yes, Miss Wasam. Yes, Jonovan. Yes, Patras, Benam, derim. Ramang, derim takabor. कल क्यूबी ने खतरनाक जोक मारा उधर ऑक्शन के बाद कह रहा है मैं सोच रहा हूँ पॉकेट खेल लूं काश 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 वो पॉकेट खेले। मेरे हेल को मैसेज किया मेरे का अपडेट नहीं बात पता क्या है, वो अरे फ्लैग खेल ड्रैगन गए देखो पता नहीं है, हम इंटरनल लॉबीज खेल रहे थे, जैद और ग्रेविटी एक साइड पे थे, मैं और कोई नूब था एक फ्लैंक पे, तो मैंने अपने नूब को मरने दिया, मैं जैद को मार रहा हूँ और वो गेम हार गए और जैद टिल्टेड क्योंकि डूम से मेरे पे खेल रहा है, तुम कैसे पीछे हो रहे हो, और क्यूबी मेरे से 6 या 7 विलेजर पीछे था बिना मैं उस पे गया हुआ। बहुत ही बढ़िया। विलेजर ही नहीं बनाता, आइडल कर देता है। Barevces, derim takabor. Yes, Kaitsanem. Yes, Patraste. Yes, Ramang, Iskarusanem. derim takabor. Yes, Spike. मेरे पास गोल्ड भी नहीं है। Barevces, Terim Takabor. Ramangtser, Terim Takabor. Yes, Iskarusanem. Yes, Spike. Ramangtser, Terim Takabor. Yes, Patras, Katran. Barevces, Terim Takabor. Yes, Yes, Jonovan. Patraste. Ayo, derim takabor. Barevces, derim takabor. Yes, Uzzais Karusanem. Ramang, yes, Uzzais Karusanem. मेरे वाला क्लाव जो वो करो। Yes, Yes, Patras. Iskarusanem. Barevces, derim takabor. Yes, Uzzais Karusanem. चल Ramang, आपको ये क्या कर रहे थे? मेरे वाला Ayo, derim मेरे वाला derim स्काउट में। takabor. ओके ओके, तो ठीक है। ठीक है ना, प्लेयर 3 भी एफसी कर रहा है। Yes, Uzzais Karusanem. Ayo, Terim. Yes, Hank Porem. Ramangtser, Terim Takabor. मतलब आप नहीं आ सकते उसका ऊपर किसी का। Ayo, मैं तो derim. बुलवाड़ लूँ। Yes, Uzzais Karusanem. मेरे पे ही है। देख ड्रैगन मारियो स्पीयर। Ayo, Yes, Terim. Yes, Jonovan. Yes, Patraste. Barevces, Terim Takabor. अभी जा रहे हैं यहाँ से। Yes, Patraste. Yes, Spike. Barevces, Terim Takabor. टीयर ले जाओ ना Yes, जरा। Patraste. Yes, Yes, Iskarusanem. Uzzais Karusanem. Yes, Patrastem. Yes, Uzzais Karusanem. नहीं चेस करेगा। Ramangtser, Yes, Iskarusanem. ओपन है गोल्ड।
Ajohterin takavuor. पीछे वाला Remonter, yes, yes, ब्लू आ गया मेरे बेस में। देख के कहीं से तो खुला है पीछे से खुला Ajohterin हाँ takavuor. हाँ Parentesterin remonter, नाइट आ रहा है पीछे से अपग्रेड नहीं है नाइट पे ऑन द हिल जीत जाओगे Remonter takavuor. Yes, sais karutsanem. Yes, patrastem. Remonter takavuor. Yes, sais karutsanem. Sais karutsanem. Yes, sais karutsanem. भाई तेन वो आगे खेल Yes, रहा है potrast. Yes, sais karutsanem. Yes, sais karutsanem. Remonter yes, sais karutsanem. Yes, sais karutsanem. Remonter takavuor. हेल यहाँ पे थोड़े आर्चर्स हैं। पहले स्टिक्स नहीं Crossbows रश कर रहा होंगे, है ठीक किसी ना? दोनों को मिल रहे हैं हेल यहाँ पे गए हैं। I don't know। के स्काउट्स आ रहे हैं अरे स्टेबल कैसे डिलीट हो गया वो? Yes, patrastem.
Ես պատրաստ եմ։ Ես ուզայս կառուցանեմ։ Ես փայտ կտրեմ։ दिख नहीं रहे। इधर है मेरे ओपन कर दे या तो फिर Բարև ձեզ, ուզայս կառուցանեմ։ Ես պատրաստ եմ։ Բարև ձեզ, ես կառուցանեմ։ अरे मार सकते हैं Բարև ձեզ, Ես ուզայս կառուցանեմ։ Բարև ձեզ, ուզայս կառուցանեմ։ այո, Man, Radu, բարև ձեզ, ես կառուցանեմ։ Ես պատրաստ, ես կառուցանեմ։ अरे बारे डाउनहिल मत आ जाओ पीछे आ जाओ। कंबाइन कर लेते हैं हम। मैं यहाँ से देखो यहाँ से ब्रेक कर। Բարև ձեզ, տեր իմ թագավոր։ देखा ही पीछे आर्मी क्रॉस बजा ट्रेड कर ले इधर ये रेंजेस ले सकते हैं इसकी हाँ इधर हिल भी है Ես պատրաստ եմ։ अब चलते हैं इतने यहाँ पे। वहाँ से हिट करके यहीं पे आ जाना या पीछे घुमा लेना। इतने इसके स्टेबल वगैरह ले लेते हैं। तुम वुड लाइन हिट कर लेना। ट्रेड है Հրամանք ձեզ, ես ուզայս կառուցանեմ։ यहाँ पे ग्रीन के नाइट है कुछ। बना रहा हूँ कैमरा बहुत लो एचपी है अब तो। आदू पूरा घूम के मारते हैं सस्ते को लेकर Բարև ձեզ, ես ուզայս կառուցանեմ։ Ես ուզայս կառուցանեմ։ है ना Այո, տեր իմ ուզայս կառուցանեմ։ अस्कल आ गए अस्कल। Ես պատրաստ եմ։ այո, դերին թակավոր։ Ես այս կառուցանեմ։ Էլ, եկո։ Հրամանք ձեզ, տեր իմ թագավոր, ես ուզայս կառուցանեմ։ हो गया ना क्लियर हाँ Այո, տեր իմ թագավոր։
Ramang Zek, Terim Tagabor, Yes, Rasputin. Ayo, yes, Zais Karutsanen. नितिन चैम्प यहीं पे जा रहा था इधर लगा थोड़ा सा पैदल करके ओके एक बार आर्कुलेट तो अंदर ही है मेरे पास एक दस मिनट। यार गॉड्स है ना हाँ हाँ अब इधर ठीक है फिर मैं वही करता हूँ Ayo, Terim तो Tagabor. जो है सब ट्रेड करूँगा सीधा स्विच करूँगा Ayo, Terim Tagabor. Yes, Patrastem. मैं भी हो गया हूँ अब Ramang Zek, Terim Tagabor. Yes, Zais Karutsanen. Yes, Patrastin. Yes, Zais Karutsanen. Yes, Patrastem. Ayo, yes, Zais Karutsanen. Ramang आने दो, Zek, थोड़ा Terim deep आने दे। Tagabor. Patrastem, yes, Zais Karutsanen. Yes, Zais Karutsanen. Yes, Patrastin. Ramang Zek, Terim Tagabor. Yes, Patrastem. Paredes, Terim Tagabor. Ayo, Terim. Ayo, Terim Tagabor. Yes, Patrastem, Terim Tagabor. यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स हैं यहाँ पर ट्रैप करो यहाँ पर मार दोगे सारे आप क्या यहाँ पर बहुत सारी नाइट्स हैं ट्रैप करके आप यहाँ पे आ जाओ बस मार देंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं है Yes, genau. Yes, Zais Karutsanen. Ramang Zek, Terim Zais Karutsanen. ट्रैप तो मैं लूना बहुत है ट्रैप Yes, Patrastin. Yes, Zais Karutsanen. Terim Tagabor. अस्कल की तरफ Yes, Zais Ayo, Karutsanen. Zais Karutsanen. Patrastem. Zais Karutsanen. ठीक है वो Yes, Zais Karutsanen. Paredes, Zais Karutsanen. Yes, please, yes, transport, yes, Yes, Patrastin. Zais Karutsanen. पीछे हूँ थोड़ा सा तो Ramang Zek, Terim Tagabor. Yes, Patrastem. Ayo, Zais Karutsanen. आजा यार भी तो यस Yes, या तू अब पे Zais मैं आपको Karutsanen. Yes, Spike, yes, hang for it. तो फिर मैं रेड करता हूँ ना Terim ठीक है Tagabor. Yes, Zais Karutsanen. करो डिनाई कर दोगे आप पुलिस से मार दो बस मार दो भाई Yes, Terim Tagabor. Ayo, Yes, Terim Spike, Tagabor. yes, hang for him. Ramang Zek, Terim Tagabor. Yes, Zais Karutsanen. ट्रैप क्लिक नहीं रुको एक बार प्रोडक्ट Paredes, Terim Patrastem. देन आ जाओ मेरे पास आ जाओ Ramang Zek, Terim Tagabor. ये ट्रैप
रुको यार ये बना रहा हूँ। बनाऊँ ट्रांसफर मैं बना रहा हूँ। इसने वो लिया हुआ है ऑर्डर पता नहीं है किसी का चलो ऐसे ही ले लेते हैं ना, क्या सेल ट्रैप्स की भी क्या जरूरत है। यहाँ पर यार हस्कर्स जा रही हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे रख देना थोड़े। मैं इसके पीछे हूँ रूम सर। रिसोर्सेज क्या चाहिए तुम लोगों को? सर कुछ भी है एक्स्ट्रा दे दो। ये देखो तीन यार जी में बढ़िया खेले यार तुम। यार आपकी मेहरबानी है। यार मेरे को लगा ये तीन स्काउट्स खेल रहे हैं। चैंपियन खेल रहा। चैंपियन मुझे भी लगा इस बार को स्काउट खेल रहे हैं, क्योंकि मैं और लेजेंड खेलूंगा। ब्लू के स्काउट्स आ गए ना, वो काफी अरे मैं तो सीन खराब हो गया। बता ही रहा था कि मैं उसके बेस पे चला गया था, प्लेयर 5 के बेस पे भी गया था घूमता हुआ। प्लेयर 3 प्लेयर 5 Saladin! I don't want to alarm you, but Crusaders are attacking our trade route. कोरियंस के साथ 1TC खतरनाक हो जाता है। मैं करा नहीं 1TC। नहीं पहले तो इनिशियली 1TC, फिर तो इकोनॉमी में ऐड कर सकते हो आराम, क्योंकि वो आर्मी तो मरती नहीं ना, और आर्मी की जरूरत ही नहीं होती। वही पूरी जब वैगन्स बन जाती हैं। इनके पास 78 एलीट वॉर है। अपना वो देखो ना, केडी देखो ना, यूनिट्स लॉस्ट 2250। उसके बाद वो मरेंगे नहीं कभी।
वो स्कूल को तो मार रही है। हाँ ये बकवास है ना ड्रैगन वॉरियर प्रीस्ट, साला इतनी जल्दी ले आता है सारे रिलिक्स। बस इतना सारा था, मैंने बस कैसल ड्रैम पुश मार दिया। अरीना पे भी वही सीन होता है, साला अरे जाओ। ये मैंने एक चीज की है जबरदस्त, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बट लिटिल थिंग। क्या? गेम में हो आप? नहीं बंद कर दी। क्या चीज देते हैं? कुछ बहुत छोटी सी चीज है, एक चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेड कार्ड्स ना क्या आपस है? में तो वो बनाएंगे, देख रहे हो? ये वाले कॉर्नर मैंने स्ट्रीम किया, देखो एक बार। क्या बात है ये? जब मार्केट से यहाँ ट्रेड कार्ड बननी शुरू होती है, कभी कभी यहाँ चैंपियन है थे ना। हाँ ये बढ़िया है, क्या ही दिमाग लगाया। कुछ वो था नहीं इंटरेस्टिंग। कहाँ गए हेल? मेरा हो गया बाद में रात को एक गेम तो खेलो, अब गेम मिल रहा है तो। ना। हमारा पहला गेम उनके वजह से था, ग्रेविटी के वजह से, क्यूबी के टीम, लीबी, क्यूबी, रॉयल, गेट्स, चिकन, चेन्नई चैंपियंस नाम। कल क्यूबी फेंडर का ट्रैश टॉक कर रहा था, फेंडर ने क्यूबी को वहीं ठंडा कर दिया क्या क्या ट्रेस टॉक कर रहा था, क्यों? कि मैं तुम्हारे बेस में आके बंडर बनाऊंगा, ये सब वो सब लगा हुआ था। कहता वो सब तो बंडर वंडर तो छोड़, तू पहले गेम जीतने से 1v1 की। 1v1 खेल रहे थे वो Okay. लोग? नहीं नहीं, उसको कह रहा था फेंडर, तू पहले मतलब कि तू बकवास बंद कर, तू पहले 1v1 तो जीत ले मेरे से, फिर वंडर बनाइयो। मतलब खेले होंगे ना, लैडर पे मिले होंगे। अच्छा तो क्यों भी कह रहा है हाँ तो मैं तो हरा दूंगा तुम्हें, ऐसे ऐसे वैसे लगा हुआ है। फेंडर ने आगे से पूरा वो न्यूक ही मार दिया उस पे। क्या? कहता जो तू स्ट्रेटेजी करके 2K पहुंच जाए, तूने वो भी ट्राई कर ली थी, वो भी नहीं चली थी मेरे अगेंस्ट। Oh God, that hurts. कि जो हंस रहे वहाँ पे मैंने पर कहा, यार ये फेंडर तो ऐसे बातें करने वाला बंदा है नहीं, यूजुअली ऐसे नहीं बोलता। इरिटेट कर दिया होगा तभी बोल रहा हाँ होगा। ये उसने ठीक है। काफी नहीं तो नहीं बोलता वो जिलिया। मगर वो सुनता भी कब नहीं है, होता है? अपनी धुन में ही ये- होता है वो। भाई ये सब होता कब और कहाँ पर है यार, ये बता। ये भी बॉम्बे में ही हो रहा था क्या? बॉम्बे ये में बॉम्बे में यार, हो रहा ये था सब यार कुछ पूरे। बॉम्बे में तुम होता है आते यार। नहीं हो यार। कल मैंने कौन सी खेली है जाके देखो, कल मैंने गेम ही नहीं खेली है, मैं तो सिर्फ ड्रामे सुन रहा था बस। Oh God, यार। मैं बड़े यार मजे घर- आते दोस्त हैं। के घर पे था, मैं YouTube पे थोड़ा सा उनका स्ट्रीम देख रहा था, ऑक्शन वाला। पर तो फिर कर बाद क्या में रहे थे? YouTube पे कर रहा था। क्या बात। यूट्यूब। देखा था ऑक्शन करते हुए, बॉन्ड ऑक्शन भी कर रहा था और साथ में टॉन्ट्स भी मार रहा था। हाँ 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 वो ऐसा लग रहा था ड्रैगन जैसे तंबोला नहीं खेलते, लकी नंबर 11 नंबर बिल्कुल वैसा 11। था, तो बिल्कुल वैसा था। ऐसे वो सबसे बात पहले कर रहे ऐसे हैं। शुरू हुआ जैसे कोई मैथ्स का ट्यूटोरियल हो, सच मजाक कर रहा है, हाँ, मैथ्स का कोई कोर्स हो। और साथ में ऐसा भी नहीं, वो जो बंदे ऑक्शन कर रहे हैं उनमें से 2-3 बंदे पैग ला रहे हैं, चकना हाँ है। अरे बहुत जो जबरदस्त था ऑक्शन यार, करा रहा है वो मैं तो पीछे बड़ा से कह मजा रहा आ है रहा हाँ भाई चटनी लेकर आ और मैगी भी लेकर आ। और क्या, मैं कहा पकौड़े तो ले आए, बना हुआ मैगी है। नहीं लेके आए। हाँ, चटनियाँ मैगी पूरा सीन बिठा के रखा था उनने तो। वाह। किट्टी पार्टी। हाँ, तो बहुत मजा आ रहा था। मैं सिर्फ आई थिंक 10 मिनट्स 15 मिनट्स देखा था मैंने, पर बड़ा मजा आया। उसने कहा आई ओपन द हाउस फॉर दिस प्लेयर, एक बंदा उससे पहले कहता 1500, कहता आई हाँ। रिक्वेस्ट दैट प्लेयर टू कीप क्वाइट। मैंने कहा या एटीट्यूड। Oh God, बहुत ही सही था। पूरा तंबोला वाला ही सीन बना के रखा हुआ था, किटी पार्टी वाला सही में। हाँ हाँ पर मजेदार था, नॉट इन अ बैड वे, मेरे हिसाब हाँ, से बहुत वही। जबरदस्त था।
नहीं लोगोस भी काफी मस्त बनाए हुए हैं लोग हैं। हाँ हाँ बहुत सारी बढ़िया बनाया। teams के। सबसे बढ़िया उनका बनाया जैनिसरी वाला। हाँ जयपुर जैनिसरीज का। मोदी कार। ये लेते हैं इनका फेवरेट। क्या हेल कहाँ गए? अरे यार गायब हो सही गए। है यार। अभी डिनर करके आऊंगा। 6 बजे डिनर सही है यार। नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी डिनर कराओ, वो पहले ही बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे बाद आऊंगा। मैं आऊंगा 11 बजे। चलो फिर इस गेम के बाद में भी तभी आऊंगा। चलो सही है। यार ये ना गलत हो। सब उल्टा गैस का उल्टा है भी थे। बहुत क्या कह रहे हो सर? तुम्हारा पॉकेट कौन खेलने वाला है? भाई 3 बंदे हैं, सबका पॉकेट एक ही है। अच्छा ये उसमें टूर्नामेंट में टूर्नामेंट में तो यार मुझे ये नहीं पता, मैं फ्लैंक खेल रहा हूँ पॉकेट। ये आप क्वेश्चन ही पता नहीं क्या पूछ रहे हो। नहीं तुम फ्लैंक की प्रैक्टिस कर रहे हो ना कि मैं फ्लैंक खेलता हूँ। क्योंकि पॉकेट की मैंने बिल्ड ऑर्डर रूडूमसर के एक्सट्रीम से दिले के लिखे हुए हैं ना, सही है। इसीलिए कर रहा हूँ। और एरिना में मैं पॉकेट तो खेल ही हूँ मैं यार। हमें बहुत ही मिल रहा है इतना भी वक्त पूरे तो। दिन नहीं आए। Super. 19 पॉप स्काउट्स वाला मैंने वो वाला बिल्ड ऑर्डर अच्छा सा किया। आई थिंक उसमें मैं कर दूंगा सबको। रनिंग तो कैंसर वो करेगा उमंग क्रश। मैं जस्ट इन एनी केस स्काउट बनाना शुरू कर दूं, लाइक 2 टीसी स्काउट्स। सच बता रहा हूँ, कर सकते कहीं भी किसी पे भी किया मैं भेज दूंगा स्काउट्स। बाकी तुम देख लेना। Hey, super. क्या पता। Bereit? Hey, ja. बस पूछ रहा हूँ, बता दो। इट इज ओके। देख लो स्काउट करो आप किसके अगेंस्ट हो। वाईके के अगेंस्ट इट्स अ बैड आइडिया, बट अगर उसके अगेंस्ट तो कर सकते हो। अरे वो करो ना कैप ड्रैम और मैनेट आर्म्स पुश बहुत ज्यादा। क्या ड्रैगन? उससे बेटर हस्काल नहीं है। बंदा डिफीटेड हो जाता है। फ्यूडल एज में कह रहा हूँ। जल्दी अच्छा, कन्वर्ट हो जाएंगे वो तो। फ्यूड है। स्टैक्स के वर्सेस होगा। मतलब कैसल एज में मैनेट आर्म करेगा तो ऑड लगेगा ना काफी। हूं स्टैक्स के वर्सेस। मैं वाइकिंग के अगेंस्ट हूँ। Hey, ja. Das war. ड्रैगन कर सकते हैं लाइट का ओपन आप 2TC कर सकते हो। 2TC स्काउट्स ओपन या उसके बाद मैं तो कह रहा हूं 2TC 2TC स्काउट्स। डिफेंसिव कैसे? ओरियन पॉकेट है ना, तो ये भी लाइट कैप की जरूरत होगी तो ये भी कर लेंगे ना। तू लाइट कैप स्टार्टिंग में कर ले बस इको बनाते हुए। हाँ अगर वो मॉन्क पुश कर रहा होगा तो ये लाइट कैप कर लेंगे। Hey, Jäger. उसका टाइमिंग बहुत वो है ना। Hey, ja. तो तब तक तो टाइम बाय कर ही देगा ड्रैगन। तब तक ड्रैगन टाइम बाय कर देगा ना। प्यारे हैं। गरीब का इतना सब। Ja. Das war. Bereit? यार इतेन तुम 10 पॉइंट पीछे रह गए यार, 20 पॉइंट पीछे रह गए। भाई मैं तो चाहता था कम से कम बोली लगे, तेरा कैप्टन और अच्छे प्लेयर्स खरीदे। वैसे तो भाई वो तो हर कोई चाहता था इतेन, पर ऐसा होता वो नहीं। मिलता नहीं ना। Ja. लो Jäger. वाइलो ले ले यार,
ये ना यार Bereit? Ja. Jäger. 20 विदाउट लूम करूंगा हाँ हाँ क्या हो जाएगा? हाँ 20 विदाउट फिर ये वाला- ideally 19 but 20 is more than fine. मैं- उन्होंने 3 दे दिए ना उड़ पे दे दे। पहले 2 ही थे शीप भी 4 खा लेने थे सेकेंड से 8 विलेजर से बना ना नहीं है डबल ऑफ एफिशिएंट और फार्म सारे पीछे आगे नहीं मिल विल पे मत बना देना फार्म मिल पे तो मैं वैसे ही नहीं फार्म बहुत कम बनाता हूं। किसी भी मैप में डर ही बहुत लगता है उधर आऊं मैं थप्पड़ थप्पड़ मार के थोड़ा कवर है सर क्या हो गया सही नहीं कर रहा ना मजेदार गुड आइडिया डराने के लिए कोई नहीं बता कि मुझे कवर करना ही नहीं आता सिर्फ हाँ, सच में नहीं आता भाई मैं तो दूसरे टीसी भी यहाँ बनाऊंगा पीछे जा सही यहाँ बनाऊँ मैं भी या यहाँ बनाऊँ मैं कह रहा हूँ बॉल डिलीट करके और पीछे बना मैं बना दूंगा यार ड्राइंग के बेस में बना दो चेन टोन पर डालो ना आराम से डिलीट होगी हाँ ठीक है वहाँ पे वो डल जाएगी स्काउट डल ही जाएगी। ढूंढो इन लोगों के अगर मैप में बाहर घूम रहे रेड का तो मार दिया मैंने बेस में ही रख फिर तो बढ़िया है इधर ही होंगे फूड पे हाँ आउट क्वालिटी बन जाएगा ना टीसी हाँ बट फिर भी चाहिए इधर बनाऊंगा यार इतना तो सोच रहे यार फिर बिछा दो फार्म बिछा दो यहाँ पे नहीं दूसरे टीसी पे यहाँ पे तो शीट खा लो Holzer. Heiße? Holzer. Bereit? Hey, ja. Ja. Holzer. Ja. Ja. Bereit? Bereit. Holzer. Bereit? Ja. Heiße. Bereit? Ja. Bubere. Lesba, hauba. Holzer. जाना यार Ja. जो स्काउट कर दे ड्रैगन Bubere. Ja. Bubere. Ja. Holzer. आप अपने वाले को स्काउट करते रहो मॉनेस्ट्री के लिए नहीं तो Ja. Holzer. Ja. Bereit. Bubere. Ja. Holzer. Ja. Bubere. Ja. Sucher. Heiße? Sucher.
हाँ विलेजर विलेजर अब आ जाओ प्लीज। आ रहा ईगल है बट कैसे रहिएगा ले आते हैं। गोल्ड पे जाओ। मैं दिखाऊंगा नहीं अपना स्कर्ट बाय द वे, आप ही उधर रखो, मैं एक बार में आके क्लीन करूंगा। पॉज पॉज करिए रूप हाँ से। पॉज 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 फ्रीज हुआ था 2 सेकंड के लिए। वो तो ना बनाऊं ना मैं टावर डिफेंस वगैरह की तो जरूरत नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं। मार्केट ब्लैक कर दो। में बना लो। हाँ हाँ वो कर दो बनाऊंगा 40। मैं। हाँ और बस और विलेजर मत बनाना, आप चले आना। स्टोन बेच देना 100। Ja. Suche. Holzer. Hey, ja. वॉल कर लो नीचे वुड लाइन। हाँ वुड लाइन तक वॉल कर दो बैरियर अबैंडन करके। और डाल लो अब अपने स्टेबल डाल लो। ये किब तक खेलोगे? किब तक खेलने का कोई सेंस है नहीं वैसे, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा। आई गेस पॉकेट भी काउंटर ही कर रहा है। बैरक तो मैंने वॉल पास कर ही लो की टाइप वॉल नहीं कर लो करो। वॉल कर लो। हाउस वॉल प्लस बाकी सब। Ja. Blueberry. Hey, ja. Holzer. Bereit. कर सकते हैं सब कुछ अगर आप सीज और नाइट और लैंसर वैसे करो। Holzer. सामने बनाऊं बाहर या अपने बेस में बना लूं? बाहर बाहर बाहर। बाहर बाहर लेफ्ट में इधर। ये आ जाओ। टेबल डाल लो ना एक और, एक ही डाला हुआ। Couvert. ये मार दिया था मुझे, ये वाला मार दिया था जो बैरक्स में मारा था। हाँ मैं सारे मार दिया था, Nächste. 2 ही लाया था। Hey, ja. लैंसर भी और नाइट्स। लैंसर्स लैंसर बोला तूने? हाँ हाँ स्पाइक्स मारने का काम आता है। डाल दो मुंह पे, कैसे ही डाल दो, मेरे तो कह रहा हूँ। रैम बना रहा हूँ। हाँ वो और आर्मी बन निकाल रहा है ना अपने उससे सीज और वो, हाँ हाँ। इसलिए कह रहा हूँ लैंसर करो नहीं ताकि। यहाँ पर मैं वो बनाऊंगा कैसल, ठीक है? हाँ पर आप स्पीयर मार लो। आप स्पीयर मारो।
Heise. मारी 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 कैप्ड रैम काम डालते रहो। यार आप भी आ जाते खेलने तो इधर बैठ के सही बात पूरे है। बता रहे हो बस अरे पता नहीं चलता ना कितनी देर चलेगी, 5 मिनट में निकलना है। ओके ओके फेयर ना वो पीछे वो मोनेस्ट्री से रैली को उठाओ ना उसका फ्री में मत रखने दो मुझे। Heise. जो उस कैप्टर आर्म से उसका बेस तोड़ दो। किपचक भी बना लो थोड़ा सा, लैंसर बनाते रहो। हाँ लाइट कैप चाहिए ओके, अच्छा मोनेस्ट्री भी ले लेंगे चलिए। मारी एक ही कन्वर्जन लिया उसने, मार दो सारा। ये मारी मार दो। Alva. Alva. फिलिप की तो गाड़ी मारती मेरे को लग रहा है। हाँ वो फुल डेड लग रहा है। मैं आपको जा रहा हूँ थोड़ा आइडल करके, ठीक है? हाँ वो अगले पॉकेट में जाऊँ अब जाके क्या पॉकेट पे मिलना है जाओ, 10? पॉकेट पे जाओ। रैप करूँगा और क्या करूँ? रैम लेके तो पॉकेट पे जा सकते हो। है ना? पॉकेट अब लाइट गैस कर रहा है। हाँ मेरे पास आ रहा है। पीसी डाल लो एक बार। वही तेरी तरफ का क्लियर कर दिया क्या पॉकेट ने? हाँ ना वेट कर रहा हूँ मैं उसके आने का, मूव नहीं कर रहा है ऐसे ना, उसको कुछ बनाने दे रहा हूँ। इधर हूँ मैं, आ गया। हाँ जो घूम के आ जा डूम्सटर। आ गई आर्मी। अरे को उस स्टेप लेंसर को नहीं देखा, विलेजर को दिख गया स्टेप लेंसर आते हुए। Heise. आप तो फुल बूम करके अब इलीट स्टेप लैंसर्स करो, मार ही नहीं सकते वो लोग। फुल बूम अभी हुआ नहीं ना। तोड़ो तोड़ो उसकी वॉल। ओ मैं लेजर Heise. Ouvert. Ouvert. फिलोसोफर रेंजेस खेल रहा है। इनकी रेटिंग पहुंच कैसे जाती है 2K?
1500 भी नहीं डिजर्व करते भाई गॉड्स के अगेंस्ट वो बूम वाले बंदे के अगर मंक्स और वो हैं यहाँ पर क्लीन कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं है। मैं जाके देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ। छोड़ दे मैं कन्वर्ट कर लूँगा वो सब कुछ। चलो सही है, मेरा हो गया टाइम, मैं निकल रहा हूँ। वाह मैग्नल से ही मार दे कैसल भी ना। मैंने तो रनिंग को भी मार दिया यार, मजा आ गया। वो भी अरीना पे थे। नहीं वो तो इसने हेल्प किया है, वो कभी मरा है। नहीं मार्केट की छोड़ दी। क्या यार बहुत ही बढ़िया तो यार। देखो उसका बेस देखो एक दिन समझ में आ रहा होगा आपको फिर उसका बेस क्या हुआ होगा। वो गाटा और लिए हुए हैं। रनिंग का भी बेस वही चुदा पड़ा है। क्यूमन्स नहीं मैंने बहुत उसका स्ट्रांग भी है। वो कैसल भी मार पाया था मैं ना, वो बड़ा सही था। क्यूमन्स को बचा लो, अगर वो क्यूमन्स को पनिश नहीं करते तो क्यूमन तो वैसे ही ठोक देगा। हाँ 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 वही हुआ। लाइक मेरे हिसाब से क्यूमन फ्लैंक तो काफी खतरनाक ही है एरिना पे, बट उसके पॉकेट को हमेशा वो उसका पॉकेट नहीं बूम कर सकता, उसको लाइक लाइट कैप ओपनिंग करके रखनी चाहिए क्योंकि इको वाइज तो वो बहुत आगे रहेगा क्यूमन प्लेयर। नेस्टेक प्लान भी बढ़िया है लेकिन 4v4 में भी लाइक पॉकेट से लाइट कैप करके मैप कंट्रोल रखो, क्यूमन बूम करके रैम पुश कर देगा साथ में। क्योंकि 4v4 में भी हितेन अगर क्यूमन का फ्लैंक अग्रेसिव आता है पनिश करने तो जो पॉकेट उसका एक बारी पुश रोक देगा तो आप सीधे उस बंदे को तो डिफीटेड ही कर सकते हो। डिफीटेड कर जब भी सकते वो हो, रनिंग हाँ। जैसे 2TC करके फास्ट टाइम करके भी मार सकते हो या कैप ड्रम से और भी उसके मार बाद सकते आपके हो। सारे ऑप्शंस भी होते हैं, एसओ भी हाँ। मिलता है आपको और हेल वेल सब है। हेल्प और इतने पैलेडिन भी हैं अगर वो है, या फिर एलीट स्टेप लैंसर्स। ना पैलेडन तो नहीं, इनके लैंसर ही खतरनाक है। हाँ इनके एलीट स्टेप लैंसर्स भी होते हैं ना ज्यादा स्पीड फास्ट स्पीड में। बनते हैं और स्पीड वाले तो डंडे ले और आते हैं वो, अरे डंडे हाँ मारते हैं एक्चुअली जोर से। वो स्टेप लैंसर्स के और लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है, फास्ट स्पीड से तो वो माइक्रो करके बड़े आराम से मार सकते हैं हिट एंड रन। चलो रात को खेलते हैं फिर जब सारे आ जाते हैं। हाँ जी उसने मैं ये लोग तो ओनियन करता अरीना हूँ ही तब तक, खिलाएंगे। और क्या। हाँ फिर करो तुम जी लोग करो। आना, खेलेंगे साथ में। हाँ हाँ मैं तो आज वैसे नहीं हूँ ही, कौन बस है खाना खाने जाता हूँ, अभी पाता हूँ 2 घंटे। मेरा तो खाना वाना सब हो रखा है। आई एम गोना प्ले सही है। टिल यू गाइस कम बैक। ओके ओके बाय बाय।
Let's see, what did I miss? No more team games for now. Everyone is gone. Who do we have? Oh, we're taken. Ein Kondo. Salve. Found all my sheeps, found the deer, all my boar as well. Gold berry in the front, gold in the back on a hill. Probably want to go for these words.
Presto. Sane. Venato. Impero. Corretto. Presto. Corretto. Salve. Quando. Fabulo. Salve. Venato. Impero. Presto. Venato. Ein. Venato. Salve. Fabulo. Salve. Venato. Venato. Salve. Venato. Presto. Impero. Venato. Sane. Presto. Ein. Venato. Ein. Quando. Salve. Impero. Sane. Salve. Impero. Venato. Ein. Sane. Ein. Ein. Venato. Salve. Ein. Corretto. Impero. Presto. Sane. Presto. Ein. Impero. Presto. Venato. Salve. Venato. Impero. Salve. Venato. Ein. Impero. Ein. Venato. Presto. Presto. Fabulo. Salve. Impero. Sane. Impero. Corretto. Ein. Caedo. Caedo. Babu. Presto. Corretto. Salve. Caedo. Impero. Salve. Presto. Impero. Condo. Caedo. Presto. Condo. Salve. Condo. Ein. Impero. Condo. Ein. Fabulo. Condo. Babu. Condo. Salve. Presto. Caedo. Ein. Condo. Condo. Impero. Condo. Presto. Salve. Condo. Salve. Condo. Impero. Condo. Presto. Babulo. Impero. Ein. Caedo. Salve. Babulo. Ein. Ein. Presto. Presto. Babulo. Correctus. Salve. Impero. Ein. Sane. Impero. Salve. Condo. Ein. Condo. Presto. Condo. Impero. Condo. Sarai. Sane. Presto. Presto. Babu. Presto. Colo. Ein. Correctus. Vermita. Caedo. Ein. Caedo. Ein. Condo. Fabulo. Verago. Ai. Sane. Ai. Porro. Pugno. Prestago. Salve. Ai. Ein. Caedo. Vermita. Ein. Vero. Ein. Salve. Condo. Impero. Salve. Condo. Salve. Presto. Ein. Porro. Ai. Ein. Fabulo. Pressane. Vero. Presto. Condo. Impero. Presto. Correctus. Caedo.
Ein. Vero. Presto. Ago. Salve. Caedo. Salve. Ai. Fabulo. Ai. Vero. Ago. Presto. Quando? Vero? Ein. Sane. Vero. Ein. Presto. Salve. Salve. Quando? Presto. Sane. Vero. Ein. Ein. Presto. Porro. Vero. Pugno. Presto. Ein. Sane. Vero? Presto. Ein. Vero. Presto. Ein. Ein. Presto. Repeat. Fabulo. Vero. Presto. Ein. Porro. Vero. Sane. Ein. Quando? Salve. Quando? Ein. Vero. Presto. Ein. Presto. Fondo. Vero? Quando? Salve. Presto. Corretto. Fabulo. Presto. Vero. Ago. Sane. Presto. Ein. Vero. Ein. Presto. Ein. Commita. Impero. Pugno. Sane. Ein. Sane. Impero. Sane. Quando? Presto. Ein. Porro. Impero. Presto. Ago. Impero. Commita. Ein. Sane. Presto. Ein. Ein. Presto. Quando? Impero. Presto. Porro. Impero. Ein. Pugno. Presto. Ein. Porro. Vero? Caedo. Presto. Caedo. Ein. Impero. Presto. Ein. Ein. Pugno. Impero. Ein. Presto. Sane. Impero. Ein. Sane. Sane. Commita. Presto. Ein. Sane. Ein. Impero. Porro. Ein. Sane. Impero. Presto. Ein. Impero. Presto. Ago. Sane. Pugno. Ein. Impero. Porro. Presto. Ein. Pugno. Presto. Ein. Sane. Ago. Ein. Presto. Commita. Ein. Sane. Ein. Caedo. Ein. Ago. Presto. Pugno. Commita. Salve. Fondo. Fondo. Presto. Impero. Pugno. Porro. Ein. Commita. Presto. Porro. Ein. Commita. Pugno. Presto. Ein. Commita. Vero. Pugno. Presto. Ein. Sane. Commita. Vero. Pugno. Ein. Porro. Presto. Vero. Pugno. Presto. Porro. Ein. Commita. Vero. Presto. Vero? Quando? Salve. Vero. Fondo. Fondo. Ein. Fondo. Salve. Quando? Presto. Quando? Ein. Vero. Salve. Ein. Quando? Ein. Sane. Presto. Quando? Quando? Impero. Fondo. Presto. Fondo. 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 Vero. Ago. Commita. Presto. Sane. Ein. Fondo. Ein. Quando? Impero. Ago. Pugno. Ein. Salve. Corretto. Quando? Vero? Colo. Vero. Presto. Ein. Sane. Presto. Fondo. Salve. Quando? Vero. Fondo. Vero? Presto. Salve. Hai. Fondo. Fondo. Caedo. Ein. Caedo. Presto. Salve. Vero. Pugno. Presto. Presto. Colo. Podio. Ein. Pugno. Vero. Hai. Fondo. Fondo. Salve. Ein. Podio. Presto. Vero? Presto. Caed. Caed. Vero? Caed. Caed. Vero. Caedo. Sane. Caedo. Ein. Sane. Salve. Fondo. Fondo. Presto. Impero. Correctus. Fondo. 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 Ein. Sane. Pugno. Salve. Caedo. Ein. Quando? Salve. Fondo. Vero? Quando? Salve. Ein. Presto. Impero. Fondo. Fondo. Hai. Colo. Presto. Fondo. Ein. Quando? Salve. Vero? Colo. Presto. Quando? Podio. Salve. Quando? Colo. Vero? Colo. Hai. Colo. Presto. Sane. Vero. Caedo. Sane. Ein. Podio. Ein. Ein. Sane. Presto.
impero, Presto, salve. Condo. Ai, con presto. ein, presto, Colo. Presto. ein, ago, presto, ein, Condo. Pero. Pero, impero, pugno, presto, ein, ago, impero, Presto. salve. Condo. Salve. presto, Pero. Corretto. Condo. Ai, caedo. Salve, nani. Ai, odio. ein, impero, Ai. Presto. Corretto. ein, impero, presto, commita, ein, sane, presto, ago, Corretto, condo. Salve. Caedo. Ai. Caedo. ein, sane, presto, ein, impero, pugno, Pero, odio. ein, Nani. Corretto. presto, ein, Salve. Ai. Caedo. Presto. Colo. Corretto. Pero. Presto. Salve. impero, ein, presto, sane, impero, ein, ago, Salve. Corretto. Salve. Caedo. sane, Ai, presto, impero, Ai. presto, pero. Condo. Pero. Salve. ein, ago, commita, Ai, salve. Presto. presto, ein, porro, impero, sane, presto, ein, impero, Presto. Ai. Caedo. presto, pugno, impero, presto, sane, Pero. Odio. Odio. Presto. Colo. Pero. ein, ago, commita, ein, pugno, pugno, presto, commita, ein, sane, impero, ein, presto, porro, impero, ein, presto, commita, impero, ein, sane, presto, pugno, impero, ein, impero, presto, ein, commita, presto, ago, impero, ein, Ai, salve. Odio. presto, commita, pugno, impero, ein, pugno, Pero. Condo. Presto. Condo. Salve. Condo. presto, commita, Condo. Caedo. Ai. Odio. Colo. Pero. Odio. Caedo. impero, pugno, presto, porro, impero, commita, ein, porro, commita, Presto. Condo. Condo. Presto. Colo. Corretto. Caedo. presto, porro, ein, commita, porro, impero, presto, ein, impero, Salve. Condo. Pero. ein, impero, pugno, presto, ein, presto, ein, ago, presto, sane, ago, impero, ein, sane, presto, impero, ago, ein, impero, commita, presto, ago, impero, ein, commita, presto, ein, pugno, impero, commita, presto, ein, porro, sane, presto, ago, sane, presto, ago, Ai. Con. Colo. ein, commita, impero, pugno, sane, presto, ein, porro, pugno, impero, ein, commita, presto, sane, impero, ein, porro, impero, pugno, sane, ago, sane, commita, porro, ago, sane, presto, pugno, ein, commita, impero, porro, presto, impero, commita, presto, pugno, impero, sane, Salve. Condo. Odio. ago, presto, commita, sane, impero, ein, pugno, presto, ein, commita, pugno, impero, presto,
pugno. Ein. Con pugno. Presto. Sane. Sane. Imperial is like the only thing that can save me. Presto. Sane. Pugno. Ein. Sane. Corretto. Salve, condo. Vero? Con salve. Ein. Prago. Vai. Sane. Presto. Ago. Vero. Ein. Vero. Ein. Sane. Presto. Sane. Vero. Presto. Condo. Caedo. Presto. Presto. Ai, sane, condo. Vero. Corretto. Sane. Corretto. Salve, vero. Ai, Correct. Ein. salve. No wood lines. Quando? Vero. Presto. Sane. Porro. Pugno. Ein. Vero. Vita. Ein. Vero. Presto. Quando? Presto. Vero. Pugno. Mita. Sane. Sane. Vero. Ein. Sane. Salve. Presto. Quando? Presto. Salve, Vero. vero. Caedo. Pugno. Ago. Vero. Porro. Sane. Presto. Vero. Sane. Presto. Ein. Vero. Sane. Ein. Presto. Ein. Presto. Ein. Vero. Presto. Ein. Sane. Fuck me. I'm just dying to Tarkans now. Commita, vero? Ein. Ago. Sane. Sane. Pugno. Porro. Presto. Pugno. Vero. Porro. Presto. Ein. Commita. Porro. Vero. Pugno. Commita. Ein. Porro. Presto. Vero. Sane. Ein. Ago. Presto. Vero. Presto. Pugno. Ein. Vero. Presto. Commita. Sane. Pugno. I'll wait to get cleaned up. Vero, ago, commita, presto, pugno, vero, sane, commita, ai, porro, vero, ago, porro, presto, ai, sane, ai, mita, ai, sane, pugno, presto, ai, sane, porro, ai, commita, sane, pugno, ago, vero, Vero? Condo. vero, sane, Ein. ai, commita, I wasn't paying attention, GG. Nothing to stop the Tarkans anymore. He's fully boomed. Probably like a 40-30 villager lead. The fast of Castle Age gave him so much map control. How's the full time panning out?
What's your job? I used to work with my brother in construction and leasing out rental properties, but now saved up a little bit of money. Nowadays I'm unemployed, doing nothing. Mostly spending the money I earn and playing Age of Empires on the side. So you're a broker? Not anymore, but yes, you could call it that. It was mostly, you can call it like I was a assistant more than anything. We could be doing what you're doing. Easier said than done. Even this is like not that easy, right? There's too many people at the top who are competing, and keeping up with them is the big issue. Playing AU2 doesn't fill bank account, pretty much. I mean, you have to be really good, and in my case, I have to stream regularly while getting good, which is a tough combination, but something I have to dedicate a lot of time to, for sure. You competed in NSC 5? Yeah, I was in both the qualifiers. Where do you stay in India? Noida. Yeah, I'm like top 30, top 20 if I'm lucky. But I would put myself around top 30. You need at least 1 lakh a month net to live decently. What? 1 lakh? That's... Bro, what are you spending your money on? I mean, I have my own apartment, so it makes it easy, but I guess most of it is just rent. But 1 lakh in rent, that seems crazy. My family members live in Mumbai, that's for sure. Rent over there is crazy as fuck. But in pretty posh areas of Delhi and Noida, it's also pretty high, so I can see that. Ho ho ho. What's up, Doomster? सोने नहीं जा रहे?
Okay, food I agree, but you can eat cheap food and just instead of ordering from outside, make it yourself. Rent, I agree. Clothes, I don't think you should buy clothes every month. Vacation enjoyment, fuck vacations. I would rather just play Age of Empires. Enjoyment, I don't have time for that. I would rather play Age of Empires. So, how many years have you been playing? Too long. 2017, 6 years, fuck me. That's a lot of time. Like my monthly expenditure shouldn't even be above 20,000, but I'm not taking into account the rent, I guess. Even that seems high, 20k. Plus, I don't know, last time I budgeted. Эй, медирку. I guess scouts is fine. I mean, Doomster's 2k3 on a good day. And he can probably climb higher, but he has no motivation of doing it. So ask him, he's the next prodigy. Internet, fuel, furniture on rent, if any. Furniture on rent? What? Groceries, etc. Not 1 lakh. You guys are crazy if you're spending 1 lakh every month. Like 40,000 on rent seems fine-ish, depending on which area you live, but the rest of it shouldn't be more than 20. Electricity bill, water bill, gaming PC. Okay. I guess. Is going to watch a movie and food costs 1500. Just pirate a movie and make food at your own home. I don't know. That seems like a non-issue. Wild kids, true. Sveiki, ką jūs sakysit? Klausau. Tuojaus. Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau. Sveiki, eini. Aš pasiruošęs. Klausau jaus. Ką jūs sakysit? Aš pasiruošęs. Chat में सब अमीर लोग. Yeah. Never buy anything inside the theater. What's the last movie I went to the movies for even? I went with my cousins, like little cousins, to fucking Aladdin. Last I remember, the fucking Will Smith one. I not went to the theater after that. Fuck going to the theater. Ką jūs sakysit? I don't enjoy that experience as much. Klausau. Eini. Aš pasiruošęs.
Aš pasiruošęs. Eimi medžiot. Sveiki, eini Sveiki, klausau. Klajus. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Supratau. Sveiki. Klausau. Ką įsakysi? Ką Sveiki, įsakysi? Klajus. Ką įsakysi? What does your family think about competing as a career? Not as happy, but they can't do shit about it. I mean, I got my degree and stuff. I did say Sveiki, if I can't do shit in this, I'll probably go do a job. sveiki, eini statyti. Plus, I live near my brother, so he can hire me whenever I'm down on funds. Aš ką įsakysi? So that helps. Aš pasiruošęs. Eini dirbti. Saladin! Crusaders are attacking our Do you train. stream full time? Not really. I would like to, but I keep fucking up my sleep and extra stuff I need to do outside. Yeah, he's like fully walled already. That thing was fucked. Sveiki, ką įsakysi? Klausau. Eini dirbti. Ką įsakysi? Eini dirbti. Klausau. Eini statyti. Klausau. Eimi Sveiki, statyti. eini statyti. Ką įsakysi? Eini statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Ah, shit. Sveiki, eini statyti. Klausau. Statyti. Aš Eimi pasiruošęs. ką įsakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstu. Not gonna get that. It's a Japanese spearman. Tavo valia, viešpatie. And I lost the will. Not good. Klausau. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Eimi, supratau. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Tavo valia. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statyti. Tavo valia. Pirmyn žapė. Does he even have an archery range? Let's check. Pirmyną. Ką įsakysi? Zoitie. Ką įsakysi? Pirmyną. Ką įsakysi? Tavo valia. Ką įsakysi? Viešpatie. I think he just wants to FC. Aš pasiruošęs. Tavo valia. Klausau. Klausau, viešpatie. Tavo valia. Ką įsakysi? Eimi statyti. Klausau, Voitie. Ką įsakysi? Žemė. Supratau. Klausau, Voitie. Sveiki. Supratau. Eimi kirstu. Tavo valia. Klausau, Voitie. Sveiki. Klausau. Eimi kirstu. Tavo valia. Mušafė. Klausau. Ką įsakysi? Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi. Klausau, viešpatie. Aš pasiruošęs. Tavo valia. Pirmyną. Ką įsakysi? Mušafė. Supratau. Klausau. Klausau. Tavo valia. Pirmyną. Eimi. Supratau. Voitie.
seguir. Termina. Cai seguir. Cai seguir. Eimista. Eimidir. Aš pasiruošusi. Cai seguir. Eimi. Užapė. Klausau. Tavo valia. Cai seguir. Cai seguir. Sveiki. Eimi dirbti. Klausau. Užapė. Cai seguir. Užapė. Tavo valia. Užapė. Klausau. Aš pasiruošęs. Cai seguir. Eimi statytum. Klausau. Užapė. Klausau. Eimi statytum. Eimi dirbtų. Eimi statytum. Eimi dirbtų. Eimi kastų. Klausau. So many bikes. Klausau. Aš pasiruošęs veikti. Ką jis sakys? Eimi statytum. Tavo valia. Aš pasiruošusi. Cai seguir. Statytum. Eimi Ką kirsti. jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Poltė. Klausau viešpatė. Ką jis sakysi? Eimi. Klausau. Poltė. Klausau. Užapė. Tavo valia. Klausau. Pirmina. Klausau viešpatė. Ką jis sakysi? Tavo valia. Eimi. Klausau viešpatė. Klausau. Užapė. Pirmina. Tavo valia. Ką jis sakysi? Eimi. Klausau viešpatė. Užapė. Klausau. Tavo valia. Ką jis sakysi? Eimi. Pirmina. Eimi. Ką jis sakysi? Užapė. Eimi. Tavo valia. Eimi. Ką jis sakysi? Tavo valia. Klausau. Poltė. Klausau. Ką jis sakysi? Užapė. Eimi. Klausau. Pirmina. Tavo valia. Klausau. Eimi. Tavo valia. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Pirmina. Tavo valia. Užapė. Ką jis sakysi? Klausau. Ką jis sakysi? Supratau. Poltė. Tavo valia. Aš pasiruošusi. Eimi kirsti. Pirmina. Ką jis sakysi? Tavo valia. Ką jis sakysi? Klausau. Pirmina. Tavo valia. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi. Užapė. Supratau. Užapė. Ką jis sakysi? Poltė. Klausau. Užapė. Ką jis sakysi? Eimi. Cai seguir. Eimi statytum. Klausau. Supratau. Užapė. Eimi. Ką jis sakysi? Eimi. Tavo valia. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Ką jis sakysi? Klausau. Pirmina. Tavo valia. Klausau. The fuck is going pikeman? Ką jis sakysi? Klausau. Ką jis sakysi? I guess. Pirmina. Klausau. Aš pasiruošusi. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Supratau. Užapė. Klausau viešpatė. Cai seguir. Eimi kirsti. Ką jis sakysi? Sveiki. Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Klausau. Tavo valia. Klausau. Eimi statytum. Cai seguir. Sveiki. Statytum. Ką jis sakysi? Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Klausau. Klausau. Supratau. Ką jis sakysi? Klausau valia. Užapė.
Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eini statyti. Tavo valiai, mūsų šiapė. Įvykiams kas? Klausau. Eimis statyti. Eimis statyti. Eimis statyti. Kai sakysi, mūsų šiapė. Sveiki, eimis statyti. Supratau. Pirmyną, pirmyną, tavo valią. Pirmyną, tavo valią. Kai sakysi, pirmyną, sakysi, šiapė. Kai sakysi, kas? Aš pasiruošiau. Eini Sveiki, statyti. eimis statyti. Tavo valią. Kai sakysi, šiapė. Eini kastu. Eini statyti. Klausau. Eimis statyti. Eimis statytų. Eimis statyti. Dirbtų. Kai sakysi, eimis statyti. Klausau. Eini statyti. Aš pasiruošęs. Eini kirsti. Eimis statyti. Klausau. Kai sakysi, eimis statyti. Sakysi? Sveiki, eimis Ką statyti. sakysi? Aš pasiruošęs. Eini kastu. Eini statyti. Eini statyti. Eini kastu. Sveiki. Eini Aš statyti. pasiruošęs. Eimis statyti. Klausau. Eini Kai statyti. sakysi? Eimis statyti. Aš pasiruošęs. Eimis statyti. Sveiki, kas tu? Eimis statyti. Klausau. Eini kas tu? Eimis statyti. Eimis statyti. Sveiki, klausau. Eimis statyti. Eimis statyti. Klausau. Kai sakysi? Eimi. Eimi dirbti. Aš pasiruošęs. Eini statyti. Eini statyti. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi. Kai sakysi?
Sveiki, ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Sveiki, ėmė kas tavo valia. Supratau, ką jis ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti. Ką jis ėmė statyti. Sveiki, ėmė statyti. Ėmė statyti. Sveiki, ėmė statyti. Ką jis sakys, ėmė statyti. Ką jis sakys. Tavo valia. Muchape. Aš pasipratau. Ėmė statyti. Ką jūs Ką jis sakys. Irmina. klausau? Sveiki, Ką jis sakys. ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Ėmė kastui. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ką jis sakysi, ėmė statyti. Klausau. Ėmė statyti. Sveiki. Ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ką jis sakys. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ką jis sakys. Tavo valia. Supratau. Aš sveiki. Klausau. Ėmė statyti. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti. Ką jis sakys. Klausau. Ėmė statyti. Ką jis sakys. Vajus. Ėmė kasti. Ėmė statyti. Muchape. Tavo valia. Klausau. Irmina. Tavo valia. Ką jis sakys. Aš pasipratau. Sveiki. Saladin! The Crusaders are attacking our trade route! Klausau. Ėmė statyti. Sveiki. Ką jis sakys. Aš pasiruošęs. Ėmė statyti. Sveiki. Ką jis sakys. Ką jis sakys. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Tavo valia. Aš pasiruošęs. Ką jis sakys.
Eğledir. Кайза Гизель. Давай, продолжим. Eimi taisyti. Aš pasiruošęs. Kaiza Gizė, šefė, puikiai. Kaiza Gizė. Sveiki. Eimis statys. Oi, šefė. Laivas. Sveiki. Eimis statys. Kaiza Gizė. Kaiza Gizė. Aš pasiruošusi. Eimi statyti. Eimi kirsti. Klausau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi kirsti. Supratau. Klausau. Ką įsakysi? Tavo valia. Ką įsakysi? Viešpatie. Klausau, supratau. Aš eimi kirsti. Klausau. Tu jau klausau. Aš Eimi pasiruošęs. taisyti. Sveiki. Ką įsakysi? Klausau, supratau. Klausau. Tavo valia. Klausau, viešpatie. Ką įsakysi? Tavo valia. Klausau, supratau. Ką įsakysi? Sveiki, ką įsakysi? Eimi statyti. Ką įsakysi? Tavo valia. Klausau, viešpatie. Klausai, statyti. Ką įsakysi? Tavo valia. Klausau. Ką įsakysi? Tavo valia. This army should snowball. You can forward elite lighters as well. Aš pasiruošusi.
GG. His YOLO castle play kind of fucked me, but was able to stabilize. Yeah. I might do coaching now. A guy wants a coaching session. I'll probably do it on stream. You guys can get some insights into how I coach. Yeah, they get husbandry and farming. H4 is fun to play, but not as competitive. Hello, what's up? Hi, I'm good. How are you? So what can I do for you? Okay, so I'm like close to 1100. I think at least I know how to play Dark Age. If I have a build order, I can do that. But after that, I kind of struggle to really understand how many I should put on what. And I like float a lot of resources. So sometimes I have a lot of wood, lot of gold. And Yeah, that's fine. yeah. Those are like the macro mistakes everyone makes when they're learning learning the game. What would be your goal for the coaching? Do you want to increase your elo, learn a specific strategy, want to coach for 1v1 team game? What's the goal? 1v1. 1v1, and yeah, I do want to increase my elo in general. Yeah. Any goal but for we the can elo? What elo do you want to shoot for? Maybe like 1400. Okay. I'm 1100 right now. And obviously, once I get there, I can go further, but that would be a first goal. I think like I really want to understand a little bit like how to do a good eco. That can we focus on. Yeah. Yeah, because I know I can't like learn everything at a time, and yeah, so it'd be good to focus on one thing at a time. Yeah, sure. So, you said you struggle balancing resources and like just understanding yourself in general. So my easiest way of coaching like beginners would be just to go over the basics
learn a few build Mhm. orders, play like 1 or 2 civs, do not expand beyond that, and master them, and then move out to the other stuff. Does that seem fine to Yeah, you? yeah, I can definitely pay the. I definitely played a lot of like Cavalier saves, so I can Okay, play cavalry. Magias. I can play something like Kama. Um, Yeah, that's yeah, fine. I generally don't play flank, so I'm kind of bored of it. So like in general, I do have like year wise, I do have like on and off experience with Age of Empire because I've been playing it since like 2011 when I was in college. So, Yeah, sure. but That's but like in most general, of never played. people's experience with it. Yeah, yeah, but I've never played like very seriously. Mm-hmm. But in general, I do have like basic idea. Like I know like basic things. Yeah, Like yeah. I What the know that. units do, what the Yeah, counters yeah, are, like basic knowledge yeah, of how the game should be played. But more of yeah, like a expanded strategy is something we should work on. yeah. Any map specifications? Are you a closed map player, open map, Arabia, arena, water map, hybrid map? We like Arabia is good. Whatever is on the ladder, I can play anything. Like right now don't play water map because I don't even water map is something I have no experience on. I don't even like it that much, so initially we can just stick to land Yeah. maps. I don't like arena, but it can be something good for like Yeah, booming kind of. macro and booming, balancing Yeah, resources for sure. You can learn on those things. yeah. I'm So, I'm happy to do any of that. But yeah, water right now I don't want to do water. like, there's two ways of me coaching. One, I can go over like really basic stuff and build on that, or we can jump right into your games and analyze that. What would you like to have in that regard? Because Yeah, each of the players have different ways of learning, and whichever works better for them, I will let them decide on that. yeah. I'd say maybe if you want to watch me play because like I don't want to go into like I don't know like obviously there's like a lot of things I'm missing Not sure. and but at the same time I do know yeah I don't need to have IDC or something like that so I don't want to go that basic also so Yeah, maybe but like you watch if me you and then if you know like all of those things, just shoot me a recorded game. Like just give me a recorded game of a game you played recently, and I can yeah quickly point out the mistakes, and based on that, I'll make the judgment of should I just watch you play and improve, or should I just go over the basics. My initial like thought process is always just do the basics and then learn one thing, then one civ, then play that civ and that particular strategy, and keep improving on that based on increments. Like I can give yeah you like that's a fine very YOLO strategy which you can just crush people with on ladder and get up to like 1400 in what 3 days. But what you want to do in the long term is something that has benefit for you like even after I'm done coaching. Is how yeah I I would don't approach it. really prefer like yellow I like rather prefer playing more properly. I know there are definitely some strategies I can do which can increase Sure. the rating, but I don't care about that. I do care about like learning it more properly, even if I increase slowly. Okay. Yeah, just send me a. Do you know how to send a recorded game? Yeah. Yeah, okay. Just send Do me you that. want to share your PayPal? I can send you the Yeah, you can bugs. do it after the session. That's fine. Okay, that's fine. Okay. Do you want me to share the screen? No, no, no. Just send me the recorded game file. Okay, yeah, got it. Let me do that. Let me start my game. Because I just go from folder there. I don't remember where's the location. You just go to your single player load game and click open saved game folder. Yeah, that's what I'm doing.
I don't have really a game in mind, but I can just give you anything, and we can just go from there. Yeah, because I think I can just quickly point out a couple of things, ask you a couple of questions based on what was happening in the game, which can let me gauge what the thought process in the game was like. Yeah, that's fair. Open game folder. So I generally never play Portuguese, but the other day I was trying to. Maybe I can just share that with you. Sure, anything works. I'm just trying to find that game. 1 second. 838680. Okay. I think I have the correct one, but let's see. So I just drop it on the Discord. Yeah. The file. Okay, hopefully this is the one. Actually, that's wrong file. Give me 1 second, sorry. This is different, sorry. 1 second. It's Khmer Bulgarian. It's fine. I can just watch this one. Okay, that's fine. I think I won this game, so. Nah, that's fine still. So we are Khmer against Bulgarians. Or maybe I lost this one because he went all. Oh yeah, I lost this one. He went all infantry against me because they have bonus, I guess. Yeah. I stuck the layer, but it's fine. 21, 22 pop. That's way too late. Yeah, sometimes trying to skip the room, but then I have to make the will. Yeah, I don't think you should ever skip loom. At this elo, there is no reason to skip loom. Okay, yeah. Also, like you're rebalancing a lot of your villages from here and there. Didn't track the mana towns. Yeah. Not cleaning the mana towns. Yeah, I don't think watching the game is gonna help that much. We have to go over the basics a little bit because Okay, that's. Yeah, I was just gauging what like the level is right now, and I think you're struggling doing the basic things. So we are gonna work on those instead of going over strategy, because I can give you a strategy, but you won't be able to execute it unless you just keep repeating it and keep fixing that. So we can build on the basics first. Yeah, that's fine. That works. Okay, let's work on a couple of mechanics first, and then I'll explain the rock paper scissors system in the initial part of the game. Then I'll give you the build order, and then we can just end the session then. Does that sound good? Yeah, that sounds good. Okay, first, are you using a gaming mouse or a normal mouse? I have like, I don't know whether I can classify as a gaming mouse, but I mean, yeah, it's as long as you can change DPI on it, it's what I'm asking. not sure. I have like this Red Dragon 3200 DPI, so I think it should have something. Like try to cycle to the lowest possible DPI. Ideally, if those have custom DPI settings, or maybe there's some software for your mouse, you can just, if you have like the model number, you can just download the software for it and reduce the DPI to as low as possible.
Okay, You should let me on see. RTS games you should really heavily avoid playing on higher DPI because you want the accuracy on your mouse. So misclicking is something that you want to avoid at all cost when playing RTS. Yeah, I'm just googling how to change this. There should be a button or something if you have like some DPI settings on the mouse Let itself, a me. Should physical I button. share my screen? Yeah, sure. Go for it. Let me share for now everything. Because I so like there's a cursor speed. Yeah, no. Just full screen it. We can change these settings as well. Like if you uh, go to my mouse thing, like look at my screen, Okay. click on additional mouse options. It should be on the right. Full screen the thing. Yeah. Click it. Yeah. You should go to pointer options. Okay. Disable enhanced pointer precision. Disable. Where's that? The top one in the Oh yeah. motion. That's Disable it. okay. Yeah. And you should make sure that this one is on the 6th side, the pointer speed. Oh, this 6th one. position. Yeah. I can't Okay. tell if it's like in the middle or not. Yeah, like it should be in the 1, 2, middle. 3. 6th position. Yeah. Yeah, And it's click 6. apply. Yeah. Click apply. Okay. That should be one way of doing it. And the other one is like you should have either physically, there should be a button on your mouse to change DPI. On the mouse itself, there should be a. Yeah. Try to lower it to the lowest possible setting. It feels like it increased. So Yeah, decrease it to the lowest possible DPI. okay, I think it is the low now. No, like you should be having to drag your mouse across the screen. Like it should be the lowest possible one. Like my DPI in this one is like around 700, so you should have it around 800, 1000. Is there a way to check it somewhere? If you have like, yeah, just download the thing, mouse, and whatever the software for this one is. I'm looking what I have. Model S101. S101. Just Google Then it. search with. Yeah. So this is Light Dragon. Yeah, just download. Just the light. There are the keyboards, mouse. Again, now we need to go for software. I'll find it. It's fine. M601 should be the one you should be looking for.
That's 10. MX M601. Just search M601. Download Okay, that that's one. one. Yeah. Setup. Right. BPS setting, and you should change it to like 1000 or 800 ideally. Say stage 1. Yep, that should be fine. Just start with 800. If you can get used to it, play on that. Okay. So we are good with the DPI, I guess. Yeah. Next setting, it's pretty same as well. Just search for keyboard on your thing. Just type keyboard, and you should have the repeat delay on the short on the top. Yeah, and then click apply and click OK. This is fine. Yeah, Repeats it. yeah. The reasoning behind this is whenever you make a villager and have to keep spamming, you can easily create new villagers. Okay. Yeah. Next, I'll give you a couple of mechanic drills. Okay. I'll go open your game in single player. Okay. Let me just share the game that way. Yeah. Okay, yeah, Age of Empire. Okay. And instead of that, Oh. we can just go over a simple build order and Dark Age. Okay. So should I launch single player? That's what you saying. Yeah. Just pick a civ. Whatever civ you would like to play on the ladder. Let's go Magyars or something. Yeah, let's do Magyar. Start the game. Standard. Let me just check my setting. I generally don't play. Yeah, this looks fine. You're able to see my screen, okay? Yeah. Okay. Szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Igen, megyek. Parancs. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Parancs. Épít. Jó napot. Gyűjtögetek. A last setting in game. Go to the settings. Okay. Go to the settings. Options. Interface. This is fine. I think it's in game. Go to game. And you should have your scroll speed around 50, 60. Yeah. Start with 50, increase it to whatever feels comfortable. So that you can scroll around on the map much faster. Crusaders are attacking our Yeah. trade Okay. route. That should be fine. Okay. Save it. Yep. Igen, gyűjtögetek. So the starting is pretty much the same, 6 on sheep. Yeah.
Sanjeev, 2 onward. You should send already 1 villager to the word. You don't have to worry that much about scouting with the sheep, by the way. Send the one in the Okay. back. Take the back lumber camp woodline. Yeah. So I took this one. Yeah, you should not do that. You should avoid trying to take the wood line in the front. There's a hill and it's a bit far away Yeah. from the town center. So avoid taking those. I should have taken this one. Yeah. Exactly. The That makes- closer to the town center the resources, the better. Also, you have 7 on sheep. You should remove 1 of them. Take the boar with that villager. Only 2 onward. Next villagers also go on food. Food. Parancs. Bring all the sheeps back. Jó napot, igen, értettem. Jó napot. Gyűjtögetek. Vadász, szolgálok, Igen. Keep scouting. A scout shouldn't be idle. Parancs. Gyűjtögetek. Should I send on berry or just put The on the? elephant. Let the villager gather the. igen, Yeah. gyűjtögetek. Vadász. Yeah, I think like there's like already a bunch of mistakes you've made, so you can quit out of it. Jó napot. Vadász, vadász. Okay. There's a couple of things you have to fix for sure. So we can go over drills instead of Okay. trying to go for the build order, because like you're having issues with creating villages and multitasking right now, so we can fix on that. Also, scouting is a bit lacking. I just wanted to judge Okay. what the Dark Age in the opening was looking like. So for the first one, it's actually kind of easy and difficult at the same time. Open up a single player, remove the AI, put your civilization hunts, resources infinite. Resources infinite. Okay. Just watch me first before you attempt to do it. You can take out a notepad or make a notepad on your PC and write the Yeah. timings that I'm going to instruct you on. Okay. Yeah. I am just going to use my computer. Yeah. So, at the start of the game, you have a town center and a couple of villages. If you start with infinite resources, you don't have to worry about gathering anything. So, you should have a hotkey for selecting your town center without centering your screen on it. I have it on J, which is select all town centers. Do you have a hotkey for that? I use tab. Yeah. Yeah. So select all town center, use the hotkey, and make 2 villages from the town center. At any given point, you should be making at least 2 villages from your town center. Not more than that, not less than that. The reasoning for making 2 villages is you want to have almost no idle time between the production cycle of every villager. And if I make it at the last second, sometimes I might idle it for 1 second. So let's say I want to be conservative with my resources and not spend my food until the last second. What happens in that case is, let's say I want to make a villager, I make it now because I was being like, I was doing something else on the screen. So what happened over there while creating 1 villager at a time is I'll have a little bit of idle time between the production cycle. So that's one thing you have to work on, making sure you have 0 idle time. So let's see, I almost did it instantly, but it still was not fast enough. So the best thing to do when avoiding any production and having 0 downtime between production cycle is to make 2 units from any production building at a given time. So either it will be villagers, your infantry, or your like units. You should have 2 units in queue from any building. Okay, that's like the first part of the exercise. Next is, while doing this, we are going to also work on multitasking and using control groups. So you know how to make control groups, right? Control group 1 to select a villager, 2, 3, 4. And what I want you to do when you do that,
is control group 1, 3, 2, 4, 5. Just keep making these control groups and making sure you're making villages the entire time. And while you're doing that, without shift clicking, the important thing about doing this exercise is without shift clicking, you have to use and move the villagers, making sure you don't get any of the villagers idle. And you have to write this down, by the way. Make sure you don't idle any villages. Use control groups to center your camera. You cannot drag your screen to center the camera. You cannot use the minimap. What you want to do to center the screen is use the control group to center the screen on the villager, and then issue a command to move them. You cannot shift click the villagers. And what I want you to do is, in around 15-ish minutes, try to scout at least 90% of the map. So 1, 2, 3, 4, 5. You can click on the map, or you can click in front of the villages, whatever you feel more comfortable with. For every new villager you make, you'll add another control group. I can do it to 10 control groups. Some people have 20 control groups. They use F2, F1 keys, but I use something else for that. So add as many control groups as possible while making sure you're centering your camera while doing this and scouting the map. Okay, guys. Do not use idle hotkey villagers until you are almost depleted all the control groups you can use. So I can use 10 and then I'll start using idle hotkey. What this will allow you to do, also you have to make sure you're making villages the entire time. So these 2 villages should never go out of the queue. So make sure you have 2 villages in queue while you're scouting the map. So this will train 2 things: your control groups, your multitasking, which is one thing. Control grouping and multitasking is basically under one bracket, and making sure you have 0 downtime between any production cycle you are making. So this is a drill I would want you to do as much as you can, and whenever you have free time, try to do this drill. Okay, that sounds good. And yeah, this is one. The second one is kind of similar, but a little bit different. You can attempt to do it in your free time as long as you remember what we are talking about. Okay. Next, we'll go with the same settings. It's just remove the infinite resources, go to standards resources, and then start the game. And once the game starts, delete your TC and your villagers and look for the boar with your scout. The reason I'm not teaching you all the strategies right now is because the mechanic, I can do the most silliest stuff and beat you for the simple reason. My mechanics are much better than yours right now. So to bridge the gap, we're working on mechanics first, then I'll give you some strategy choices, and making sure that you can execute them will just be giving you a better result. That makes sense. We are learning how to learn right now. So that's what fair. I'm focusing on. When you are near the boar, hit it twice and only 2 times. 1, 2, and then the boar will chase you. Now, what I want you to do is make sure you control group your scout, and until it reaches you, let the boar go 2 tiles away from the boar and keep scouting the map like this. I want you to make sure you keep this boar in tow of your scout the entire time without losing it, and make sure you don't lose your scout. You have to pay attention to the scout and use the scout to make sure you don't lose it. I am doing it slowly. It might be a little bit more hectic based on how much HP you have left. If you lose your scout or if you lose your boar, you have to repeat the exercise all over again. Right. So try to get at least 70-ish% of the map in 15 minutes. If you can do it, you can move on to the next one.
So this is another one. Okay. And the reasoning, you can even write it down why we are doing this, so it will be much easier to do it. So the reasoning for this is to center your scout and pay attention to the scout. So what you can do on the next part of this is control group your sheeps. So you go 1, 2, 1, 2, 3, 4. So you can jump while you're luring the boar. You can go back to the sheep, make and do something. You can even move them if you want. Yeah, that makes sense because in the game you are doing same. You are jumping between Yeah. PC, scouting, going to villages. So we are Exactly. just So this is practicing going the to train same you for thing. that. So you Yeah. lure the boar, make sure you don't, like I'm starting to, because I'm explaining at the same time, I'm starting to take hits. But if I'm focusing, like this does require a lot of focus. Multitasking this is like not as easy as it might seem. Yeah, correct. So just to make it more difficult, like try to do it with the boar only before you jump to the sheep exercise. But if you can One by include one, doing it correctly, just go back, control group your sheeps and start moving them. Just you don't even have to like shift click or whatever. You just make sure you don't lose the boar, you don't lose the scout. So do this for like as much as you can. This will train, like it might seem very simple right now. Do it yourself and you'll see how much difficult this becomes the longer you do it and the more patient you have to be while doing it. No, I don't think it's simple because like similar kind of problems I have in the game, correct? Exactly. We are training on multitasking right now. That's all we're training. We're training on production cycle and we're training on just basic mechanics right now. Okay, that sounds good. That's one exercise, and now we'll go over like some game theory. This will help you understand how to scout more efficiently, find your resources very quickly, and find your opponent very quickly. So we are jumping into the game, more game related content, as I can call it. I have made a video on it, but I can give you like a crash course on it's like 2 minutes or 3 minutes in video explanation. I can give you a more in-depth explanation on how to find your resources, how to find your opponent, and how to like look for markers on efficient scouting. Okay. So in the start of the game, I'll just do it whatever, it doesn't matter. There's a couple of key things I want to explain. When you start the game, you start with one sheep in your vision, depending on of course which map script you're playing, but right now in the standard you start with one sheep in your possession and your other sheeps are always near that. So you start with 4 sheeps. One of them is in vision, the other 3 you have to pick up. In this case I started with 2 on the right side. The sheeps will always spawn on the right side of the town center. Always. That's like a given. It's like set over there. So in the start of the game, what you want to do is select your scout and send it to the right side of your town center to pick up the sheeps. Right? Now I have all 4 of my sheeps. Okay, I didn't knew that. I thought like they can be on any side. I mean, I think on general random map script on the ladder, I think it's always on the right. But in some custom or random maps, it can be a little bit different. Okay, that's good to know. Yeah. And then next, what you want to do is when you find your sheeps, on how to find your boars. Your boars are always equidistant to each other from the town center. What I mean when I say that is you want to leave at least 4 to 5 tiles away from the sheeps that you find them in and go for the scouting in that circle. Leave a little bit of space. You will never want to scout this particular black spot. Okay. So there's nothing wasted important scouting anyway. time. Exactly. And now I found one of my boar if I follow this pattern. And now when I find one of my boar, what you want to do is to find your other boar is just follow the line. If you find one, if you go in the same circle, you'll always hit your second boar. I found my sheep as well, which is lucky, but again, sheep is something you don't have to worry about right now. We are looking for our second boar.
And if I just make sure I am seeing where my boar is, I'm gonna use that as a guide to find my second boar. And Okay. I found my second boar. And the way you find your sheep after you find your boar is by increasing the radius at least 10 tiles more. I got lucky. These sheeps are kind of near. It can be random. So I Yeah. found them near the boar. It can be on the largest extent of the boar. It should be at least 10 tiles from the boar. Right? So Yeah. if I find one of my sheep pairs, I should also be able to hit my second sheep because they are also equidistant from each other to the town center. So if I follow the same radius, I'll be hitting my sheeps again. Okay, that makes sense. So in practice, this might look a little bit like quick. If I use these things to my advantage while I'm looking for improving my start, what this will look like in practice is you find your sheep, and like a little bit more advanced stuff is using these two sheeps to find my boar and using the scout to find my sheeps. So I'm not even going to find my boars with the scout. I'm going to straight away look for my sheep with the scout because I know where the That boars makes are going to sense, spawn. Yeah, Found one of my that's boars. a good point. Yeah, So I'm just gonna look because for my anyways sheeps you don't have to select the bow, but you have to select the you have to gain the sheep's kind of control. Yeah, exactly. by scout. Boars are not really going anywhere That unless makes your opponent is laming you. So I've found Yeah. one pair of my sheep, which are kind of near. So I know I have to just go in the same circle. And it's like under 2 minutes, I'm finding all my resources. I found both my boars, all 8 of my sheeps. Under 2 minutes in game time. Okay. So like this is, if you use this method and remember these markers on the map, you can use these to immediately find all of your resources. So it cuts down on your scouting time by a lot, and you can be much more efficient with your initial scouting. So the next aspect of your scouting should be to finding your opponent or finding your how to wall. We don't have to worry about that just yet. I don't think you should be worried about walling at all. You should just be trying to make army and trying to kill your opponent. Walling should not be even a thought until you reach like 1400. We're not going to play with walls at all until you reach 1400, because playing with army and controlling army to win games is what you should be focused on right now. Yeah. Yeah, I think walling should be more advanced strategy. Like, Exactly. So you should be able to play win army, without make walling. counters, and work on that. Yeah. So this is like the basics of it. So now when we are done scouting, there's 3 positions our opponent can spawn. This, right? These are the only 3 positions your opponent can spawn. Because they are like kind of opposite to the town center. We use our town center to find our opponents. If we make a straight line from the center of our town center, these are the exact 3 positions your opponent can spawn in. So what I want you to do is avoid scouting the edges. Never scout these like borders. This is wasted scouting time. What you want to do is be efficient with your scouting. Finding where your opponent is and looking for what they're doing should be the priority of your gameplay. So to do that is to find your opponent very quickly. So these are the 3 positions opponent can spawn. You can get the mod to find the center of the town center. I used to actually physically, with a marker on my monitor, I used to draw a circle on the minimap. But what you want to do is pick one of these positions. When you're done with your initial scouting, pick either left or right. Never scout the center. Never scout the center. And the reasoning for that is, if you go and like, let's say you go straight to the center and you do not find your opponent. Now the issue is he will either spawn on the left or the right. Right? You have to go 2 different directions. Yeah, so you have to go repeat. to 2 If you go in a directions. circle, it's better. Yeah. Yeah, and That if makes you sense. choose incorrectly, if you go to the bottom and your opponent doesn't spawn here, what you have to do is trace your steps all the way back or go all the way across to the top, and now you have wasted a lot of scouting time. So picking one of the directions, either left or right,
makes for a much more efficient scouting pattern, because you're hitting all of the 3 positions at least once, and you should be able to find your opponent if you follow that advice. Yeah, probability wise, it's good. Like, you can be unlucky, it can be the third one, but in general, like, probability wise, it And makes now sense for looking for markers on the map. So let's say our opponent is not going to spawn on this area. I would have been hitting like a flat ground a little bit. Now, like, there's a bit of hills, there's a little bit of forest in the center. Usually your opponent doesn't spawn. There were a couple of hills, so I didn't go on the north. There were also a wood line. So these are like a couple of markers I'm looking at. There might be a few more markers, but these are enough for me. So again, I'm just looking, going through the center. He might spawn over here, and he was in the center. So in this case, I used the hill as a outlook. So 4-tile gold is pretty conclusive that he's not. No, this was our. Okay. I don't even know where his second tile gold is. What I judged based on how to find him was looking at the hill. Your opponent never spawns, like the base doesn't spawn on a hill. You can have hills kind of near the outside of the ring, but your center of your town center never has any hills near it. Yeah, correct. So you should be trying to avoid the hills and looking for flat ground when trying to find your opponent. Okay, that makes sense. So again, like, we can just go over this one more time. Like, I'll even skip the scouting. So these are the 3 positions. I'll just go from the left. Doesn't matter. I'll like kinda to the center. Avoid scouting the corners and pick like the most direct path to one of the directions. And now I got lucky. Because I'm instantly hitting him. I'm instantly hitting him, but like, this is how efficient it can be. If you're done with your initial scouting, you can immediately hit your opponent. Like, you don't have to worry about the deer pushing or anything right now. Finding your opponent and looking to see what they are doing is something you should be focused on. Okay. So use these methods to improve your Dark Age and learn the Scout Rush build order. I can give you a YouTube playlist of the build orders I did, and I can also give you like one without the deer right now. If you want to learn to push the deer, there's also a couple of instructional videos on YouTube. You can just follow those to get like into the habit of deer pushing. It's mostly about using the couple of follow command hotkeys behind the deer and timing it to push towards the town center. If you don't want to do it, it doesn't matter right now, because at your level, it's all about making sure you're using your military correctly. Yeah. For the last one, I'm just gonna give you like a pretty simple build order. It's not that difficult. You can just use this, save it, write notes on it, and then try to replicate it in Dark Age. If your Dark Age is the same as mine, if you're hitting the same timings as mine, you can basically then use it on the ladder. But I would just keep practicing on single player until you can use the same, you hit the same timings as I have. And I'll also give it like till kinda Imperial-ish. I won't just leave it till Feudal-ish. I'll give you instructions on what to do in each situation so that it can be like an ideal game. In future, you can just send me Rex and ask, like, just first analyze, see what went wrong yourself, and if you can't understand what went wrong yourself, only then send me the Rex. Okay. If you lose and you know what you did wrong and what you can improve on, do it and see if you can make an improvement in the next game. And if you can't make an improvement in the next game, that's when you basically ask for my help.
That makes sense. Like if you messed up your build order, you just have to fix your build order. There is no shortcut for that. So 2 onward, fix on cheap. I'm already going to find my opponent. Szolgálatára. Gyűjtögetek. Igen. Parancs. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Parancs. There's a couple of hills. There's a cliff. There's a relic. So my opponent is not spawning on the left. Parancs. Igen. Szolgálatára. Jó napot. Megyek. Igen. Szolgálatára. Azonnal. I found his main stone Parancs. because main stone is 5 tiles. So I already know where he is. So he's somewhere over there. Szolgálatára. Yeah, If the I board wanted is to lame, I also- could have lamed, but I don't have to. Jó napot. Vadászok. Just focus on your own build rather than trying to Szolgálatára. worry about what the opponent is doing. No need to adapt also, by the way. We do not need to adapt. Just focus on doing your own gameplay. Don't worry about what your opponent is doing. See where he is, see what opening he's doing, but we can just keep playing our own game plan. Jó napot. Azonnal. Makes sense, yeah. Adapting is something, Szolgálat. yes, you can do, Jó napot. but Yeah. it's not really that needed. At this level, anyways, like if you just play your game properly, you think. Exactly. Jó napot. Vadászok. Szolgálat. Vadászok. Just keep scouting your opponent. See where his wood is, see where his berries are. Parancs. Gyűjtögetek. Parancs. Igen. Fát vág. Jó napot. Igen. Igen. Szolgálatára. Parancs. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Parancs. Igen. Jó napot. Gyűjtögetek. Jó napot. Megyek. When the board is Igen, almost pokolát done, értettem. redistribute to the board. Fát vágok. Jó napot. Megyek. Igen. Szolgálatára. Parancs. Szolgálatára. Gyűjtögetek. Jó napot. Fát vágok. Parancs. Fát vágok. Szolgálatára. Igen. Igen. Parancs. Fát vág. Igen. Fát vágok. Jó napot. Gyűjtögetek. Gyűjtögetek. Jó napot. Gyűjtögetek. I messed up, sent 5th villager to the berry. Should not have done that. Jó napot. Gyűjtögetek. Yeah. I messed up my own build order. I didn't see I sent the 5th one. If you keep the 5th villager on the sheep, you should have enough resources to go up. Okay. Jó nap. Gyűjtögetek. Parancs. When you're up, make the barracks. You can come back, try to hunt his scout with your scout if you're up at 19 pop. Jó napot. Igen. Gyűjtögetek. 8 on 1 lumber camp is more than enough. Szolgálatára. Parancs. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Jó napot. Gyűjtögetek. Parancs. Szolgálatára. Igen. Jó napot. Azonnal. Gyűjtögetek. Gyűjtögetek. If you can kill the scout, go for the kill on the scout. But Yeah. ideally, you want to just be looking at what your opponent is doing. When you're up, make the stable, get the wood upgrade, Jó napot. Fát vágok. and all the new villages stay under the town center. Get the farm upgrade as well. Jó napot. Építkezek. Parancs. Gyűjtögetek. Igen. Parancs. Fát vágok. Szolgálatára. Szolgálatára. Fát vágok. Igen. Építkezek. Make farms whenever you have 60 wood. Yep. Parancs. Make scouts when the stable is up. Gyűjtögetek. Építkezek. Like the big thing is just going up faster and making some military. Jó napot. The faster you can
do some damage to your opponent, the better. Yeah. Igen, építkezek. Szolgálatára. Wait for 3 scouts before you move out. Megyek. Jó napot, építkezek. Gyűjtögetek. Once you have 3 scouts, try to do damage. Szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Szolgálatára. Építkezek. Igen. And the number of farms I would want you to have Parancs. is at least 14 before you decide to do anything Igen, else. várvágok. Igen, Jenny. Yeah, then if you want to go up, then Saint Corda is. Yeah. If you wanna add the gold or something or add more villagers to gold, doesn't matter. Just try to pick off villagers with these 3 scouts. Run away from spears if you see any. This is where the multitasking will come into play. Making scouts while making farms. Mhm. So getting into the habit of doing this. Make scouts, micro down the villagers. Igen. It's just like really basic stuff that of course you're used to, but practicing it is what is going to give you the Yeah. edge. Parancs. In theory, it makes sense, but yeah, I can't execute it. That's the Szolgálatára. problem. Yeah, as if you improve your mechanics, you will be able to. Igen. Szolgálatára. Építkezek. Now just keep circling around his TC, add more scouts if there is a need for it. Ideally, you want to go for 6 scouts. Szolgálatára. Parancs. And now we can start sending to gold. Igen. Építkezek. Parancs. Gyűjtögetek. Építkezek. You can keep making houses as part of your wall if you want to do it, but Építkezek. Gyűjtögetek. ideally, just no need for any walls. Yeah. Igen. Szolgálatára. Once you have 6 scouts, you can cut production and just prepare to go to Castle Age. Make a Okay. tower on the gold if there are archers and spears. Igen. Make house walls to the Okay. town center from the lumber camp. If you wanna protect, like to protect my berries, I made my production buildings in front of it, so you can just use that as your like. But if you can keep fighting your opponent with scouts and keep killing his Yeah. army, you don't even have to wall. Just keep making more scouts. Like you can even get upgrades on your scouts. I'll get blacksmith, so I can even get bloodlines if I need to increase the HP of my scouts. Get armor for my scouts if I'm worried about Jó napot. fighting archers. So like a spear like this, I can even kill it because of the amount of scouts I have. So fighting spearmen with 3 scouts is ideal. 4 scouts, you can basically micro down the spear without taking a lot of damage. So don't be that afraid of fighting spears once you have like a lone spear with a couple of scouts. Yeah. I can just click up now after this villager. Igen. Vátvágok. Parancs. Építkezek. Szolgálatára. Szolgálatára. Parancs. And once you're up, these berry villages can also go to work. I also replaced my lumber camp so that I have a little bit more efficiency. Bányászok. Jó napot. Gyűjtögetek. Fát. While going up, you want to get your upgrades. I can kill the spear if it's alone like this. Get armor, get bloodlines, add a second stable. Spirit of the Law here. Knight Xantine, thanks for tier 1. And when you're up, you basically add town center, play double stable knights. I'll send you couple of videos on some beginner stuff. You can just use those to get a better idea for that. But yeah, work on the drills I gave you. Work on the build order. This one. Watch the videos and then try playing on ladder and try to analyze yourself what went wrong first of all.
Mm-hmm. Yeah, See that if you makes made sense. mistakes, see what your opponent did better than you. These are all like the things I would be focusing on. Okay, yeah, that makes sense. Okay, that should be it then. Yeah, that sounds good. I'll be looking forward to seeing what you can improve on. But yeah, I'll pass you the videos and you can work on it and give me feedback on what you found useful. See if it works for you, and then we can continue on later if you're interested in more. Yeah, I definitely like to do a little bit more. For sure. Okay, and that's it from me for now. Okay, thank you, Dragon. Bye bye. See ya. So I guess you guys had no fun. Coaching low rated players a little bit tough because most of it is just repeating what I've already taught previously. It's mostly just working on basics is what is needed. Keyboard का setting just type keyboard on your search. Keyboard properties should open and then put the repeat delay to the short and then click apply. I think I'll play when everyone else is also online. That's it from me for now. Walling, you can do it, but for learning, I would say avoid it for now. Once you get to like mid elo, that's when you can start utilizing walls again.